आप लोग को मैं अनम्यूट कर दे रही हूँ। जिनको बात करनी हो बस वही अपना अनम्यूट करके बात करें, नहीं तो क्या सबके अनम्यूट रहते हैं तो बहुत हल्ला हो जाता है, पूरी क्लास हल्ले वाली हो जाती है। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून गीता जी, नमस्ते। नारायण नारायण। नारायण नारायण। नीता जी नमस्कार। बहुत अच्छी लगी ये क्लासेस। थोड़ा थोड़ा मैंने भी फॉलो किया है, ज्यादा तो नहीं कर पाई लेकिन किया है। काली चाय पीने लग गई, दूध की चाय छोड़ दी। राधे राधे आंटी। राधे राधे। नीता जी। हाँ हाँ नमस्कार, मैं संध्या धारीवाल बोल रही हूँ, अभी 2 दिन से जुड़ी हूँ। हाँ, तो आप मेरा नाम नोट करेंगे या क्या प्रोसेस है आपका? आप नंबर चैट बॉक्स में लिख दीजिए, है ना जी। मानसी आ गई जी? से मुझे मेरा बहुत बढ़िया हुआ, सुबह का सेशन बहुत बढ़िया। थैंक यू। आप थे क्या आरती जी? हाँ मैं हूँ, पूरे दिन हूँ मैं, 21 मतलब जितने दिन का है पूरे दिन हूँ, हर किसी को सुन रही हूँ। आपका बहुत बढ़िया हुआ, आज मजा आया। और एक बात पूछी थी नीता जी, हमको हमेशा ये नंबर 4300 टाइप करके और फिर ही हम इस पे लिंक पे आ पाते हैं, तो डायरेक्ट लिंक नहीं है क्या? हाँ, मैं आज माही ने उसी के बारे में बात की है तो मैं कल से पासवर्ड हटा दूंगी, आप लोग सिर्फ टैप करेंगे और आप लोग आ जाएंगे, है ना? ओके ओके ओके, थैंक्स। आप लोग को बेवजह तकलीफ होती है? नहीं तकलीफ नहीं होती है, पर कैसा ना बहुत ऐसी जल्दी होती है, इतना भागते दौड़ते आते हैं ना, फिर लगता है अरे इसमें भी अपना 1 मिनट जा रहा है, हम 1 मिनट लेट पहुंच रहे हैं, और कुछ नहीं, तकलीफ वाली कोई बात नहीं। आप लोग इसमें ज्यादा कंफर्टेबल हो तो ऐसे रहने दो। नहीं, वो क्या बीच में थोड़ा सा प्रॉब्लम इश्यूज आ रहे थे तो हम लोगों ने ये वाला डाल दिया था कि पासवर्ड करके लिख के आना है, तो कल तक के हटा देंगे हम लोग उसको, तो कल आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, डायरेक्ट आप बस टैप करेंगे और आप लोग पहुंच जाएंगे, है ना? तो मैम मैं एक बात होगा, थैंक यू नीता जी, थैंक यू इसके लिए। बहुत नहीं तो वो करना पड़ता है टाइप पासवर्ड वगैरह। हाँ नहीं वो हटा देंगे, आज माही ने मेरे को बोला ही है कि नीता मैम एक बात पूछूं? हाँ पूछिए। मैम आपने जैसे मेरा कल से वो कल परसों से लिक्विड डाइट शुरू हो जाएगा, मुझे बस खाने की क्रेविंग तो नहीं होती, बस मुझे ना नमक का वो लगता है कि बॉडी नमक मांगती है। मेरा भी वैसे ही प्रॉब्लम है, तो क्योंकि मेरा भी बीपी लो हो जाता है तो मैं जूसेस में थोड़ा सा सॉल्ट डाल के ले लेती थी, है ना? तो लिक्विड डाइट में आपने क्या किया जब आपने सिर्फ फ्रेंड्स, मैं तो आप लोग को पहले भी बताई और सर को भी बताई कि मैं 3 टाइम फ्रूट्स जूसेस लेती थी, 1 टाइम मैं कोकोनट वाटर लेती थी और 3 टाइम्स लाइम हनी वाटर, 7 टाइम्स मैं लेती थी, कभी कभी 6 टाइम्स होता था, 3 टाइम जूस लेती थी और हर जूस में मैं थोड़ा सा सॉल्ट डालती ही थी, क्योंकि इतना पानी पीने से मुझे थोड़ा सा सोडियम कम लगता है ना, तो मुझे वीकनेस। लिक्विड डाइट की बात बता रहे हो आप? हाँ, लिक्विड डाइट में 3 बार आप जूसेस भी ले सकते हैं, ठीक है ना? पर गैप होना चाहिए बहुत जूसेस के बीच में, ऐसा नहीं कि लगातार आप 2-2 3-3 4-4 बार पी रहे हैं। जैसे मैं सुबह लेती थी 11 बजे, फिर 4 बजे जब मीटिंग में बैठती थी उस समय मैं 1 बार लेती थी, और रात के 8:30 बजे 1 बार। थैंक यू मैम। और एक जो ग्लोबल राइजिंग स्टार्स है वो आप ही रन करेंगे, आपकी टीम ही करेगी? जो ग्लोबल राइजिंग स्टार्स बच्चों के लिए आ रहा है, जो एनरोल करने के लिए, वो दूसरा PSSM के दूसरे मास्टर आशा गुप्ता जी कर रही हैं, तो जिनको भी ज्वाइन करना है वो कर सकते हैं, है ना? वो हम लोग का नहीं है, हम लोग एक ही सेशन में हमारी फिर मैम वो मैं तो इसी सेशन के साथ रेजोनेट कर पा रही हूँ, और फिर वहां पे तो वो सब मास्टर्स वगैरह बुलाएंगे या ऐसा कुछ, तो मुझे वो देखिए, पहले से आप जज मत करिए ना, परसेप्शन भी मत बनाइए, आप जाइए, एक्सपेरिमेंट करिए, एक्सपीरियंस करिए, फिर आपका दिल जो कहेगा फिर आप डिसाइड करिए, है ना? गुड इवनिंग गीता मैम। गुड इवनिंग चांद जी।
नमस्ते निशा जी। नमस्ते भारती जी, आपने अपने ग्रुप्स में शेयर किया? अभी करती थे। आज मैंने स्टार्ट किया क्योंकि मैंने पहला वाला वर्ड रिपीट नहीं किया था। फ्रॉम टुडे आई एम स्टार्टिंग इट, तो मैंने आज मॉर्निंग में खाना और आपकी आवाज कट रही है मैम, तो यहाँ पर बचा 2 बार ही खाना है अभी का जो एक्सक्यूज रिपीट मी, है ना। मुझे एक अनाउंसमेंट करना है बस कि जो लोग 3-4 ग्रुप में से कहीं पे भी है तो प्लीज रिपीट नंबर मत भेजिए। हाँ बोलिए और बोलिए। रिपीट नंबर मत भेजिए और थोड़ा सा पेशेंस रखिए, क्योंकि हम ऐसे बैठे हुए नहीं रहते, हमें भी काम होते हैं कि कोई आएगा और हम लोग ऐड करेंगे। इट्स नॉट लाइक दैट। हम लोग 4-5 लोग हैं, फिर भी टाइम लगता है। एक आध दिन का वेट कर सकते हो तो प्लीज हैव अ पेशेंस। और जिन लोगों को भी ऐड करना है हम लोग करेंगे। आप मेरा नंबर नोट कर दीजिए, मैं चार्ट पे डालता हूँ मेरा नंबर 988811333310। आप अपने नाम के साथ मुझे व्हाट्सएप पे भेज देना। देखिए, जब टीम मेंबर कोई बात कर रहा है तो प्लीज किसी को भी बात नहीं करना है। वो कोई इंपॉर्टेंट मैसेज दे रहा है तो आप लोग सब लोग सुनिए। हाँ चलिए, किम जी बोलिए। तो मैंने मेरा नंबर डाल दिया है, रिपीट कर रहा हूँ 988811333310। इस पे आप अपना व्हाट्सएप का, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप आपका नाम और नंबर दोनों भेजिए। आप जस्ट नंबर भेज देते हो, मुझे ऐड करो। मेरे पास आपका नाम सेव नहीं होता है, हमें पता नहीं चलता कि किसको सेव करना है। सो प्लीज आपका नाम और नंबर दोनों भेजिए, क्योंकि यहाँ पे चैट बॉक्स में इतने चार्ट्स आ रहे हैं कि 1-2 नंबर मिस हो सकते हैं और यूट्यूब पे भी आ रहे हैं तो मिस हो सकते हैं। तो आप इतना प्लीज कोऑपरेट कीजिए एंड जस्ट प्लीज वेट। 1 दिन 2 दिन तक वेट कीजिए, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी लिंक वगैरह तो है ही। थैंक यू वेरी मच। एक बात पूछूं? थैंक यू खेम जी, मानसी जी और माही जी, तीनों बहुत बहुत। आज ही मेरे ख्याल से 70 के अबव लोगों को आप लोगों ने जोड़ा है। इतने नंबर्स को सीव करना, जोड़ना, इट्स टू टफ। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग। खेम जी, जो अभी चैट पे नंबर्स हैं वो मैंने कर दिए ऐड, जितने भी चैट बॉक्स में हैं, ठीक है? तो और अगर कुछ करती जाऊंगी तो मैं आपको बता दूंगी बिसाइड्स इस चैट बॉक्स में ड्यूरिंग द मीटिंग। बाकी तो अपन कर ही लेते हैं। चलेगा, बिल्कुल। खेम जी एक बात पूछूं, ग्रुप को नंबर क्यों दिए 1 2 3 4? यानी समझ में नहीं आया ऐसे मैम एक ग्रुप में ज्यादा से ज्यादा 250 तो थोड़े से ऊपर लोग जा सकते हैं, लेकिन हमारे मेंबर्स इतने बढ़ गए कि हमें और ग्रुप करने पड़ रहे हैं। तो आपको एक चीज भी समझनी है, चार जो ग्रुप हुए वो सब सेम है, कोई अलग नहीं है। बस रूम जितनी है उतने ही हम लोग डाल सकते हैं, उससे ज्यादा डाल नहीं सकते। इसलिए हमको 1 2 3 ऐसे करने पड़ रहे हैं। अगर आप ऑलरेडी किसी एक ग्रुप में हो तो प्लीज वापस दूसरे ग्रुप में आने की ये मत करो। नहीं तो फिर चारों ग्रुप एट ए टाइम ज्वाइन होते हैं इसमें फिर? हाँ, चारों ग्रुप एट टाइम जो लोग हो सकते हैं सारे होते हैं, चारों लोग होते हैं। ठीक है, मैं तो क्यूरियोसिटी कैसे पूछी, मैंने नहीं आपको वापस रिमाइंड किया। गुड इवनिंग। सर ने ज्वाइन कर लिया है। गुड इवनिंग सर, नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्कार, नमस्ते। गुड इवनिंग सर। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते सर। नमस्ते सर। गुड इवनिंग सर। नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्ते सर। प्रणाम सर। नमस्ते सर। नमस्ते सर। वेलकम सर, वेलकम। नमस्ते निशा मैम। Namaste sir, going on and on. Namaste sir, going on and on. Once for all. वेलकम इन ध्यान भारत सर। सत श्री अकाल सर। सत श्री हाँ, अकाल। वेलकम टू ध्यान भारत सर। नमस्ते सर। वेलकम सर। यहाँ पे लिख दो कुछ ना कुछ, बोल दो मुंह से। अरे यार फोटो कहाँ चलेगी? नमस्ते सर। दो चालू करके दूं आपको? नमस्ते सर। जाके आप बाद में कर। Okay, friends. So, yeah, it's a very great welcome for the second innings, for the second season 2. So, thank you very much. So, today everybody will be excited. What is सर एक मिनट अनम्यूट करिए, सब लोगों को म्यूट। हाँ
So it will be a new beginning, which is like a continuation of the old. So we are still going to follow the old things, but there will be some new additions. But before we begin, I just want to know, is there any newcomers, anybody who is joining new, who don't know meditation and who are joining new for the first time? Is there anybody like that? सर जानना चाह रहे हैं कि आप लोगों में से कोई एक ऐसा भी है क्या जो मेडिटेशन जिसने अभी तक के नहीं किया हो, उसके बारे में नहीं जानता हो, तो हैंड रेज कर सकते हैं। जिन्होंने आज पहली बार जुड़े हैं और जिनको मेडिटेशन के बारे में नहीं मालूम है, वो हैंड रेज कर दें। So there are few people. All right. So Anita ji, आप फेवर कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर, जैसा बोलिए। उनको हिंदी में कैसा करना, basic 3 steps. Maybe I'll say you can translate. So friends, meditation is very simple. It's very, very simple. The very purpose of meditation, the very goal of meditation is to empty the mind. And how to empty the mind? There's 3 simple steps. In meditation, there are 3 simple steps. The first step is the posture. You need to clasp your hands, fingers into fingers, cross your feet, and sit very, very comfortable. So in the first step, you are completely relaxing your body, totally relaxed, no tension in the shoulders, no tension in the eyebrows, in the facial muscles, no tension in the entire body. So locking the fingers, crossing the feet, and relaxing the entire body. That is the first step. The second step is you close your eyes and observe your natural breath. The breath is happening, but you're just witnessing your own natural breath. If your breath is short, you follow the short breath. If your breath is long, you follow the long breath. You just follow your natural breath. Your awareness should go along with the breath. That is the second step. The third step, if you notice any thoughts while you are meditating, especially if you're a beginner, you will notice a lot of thoughts. So if whenever you notice any thoughts, don't fight with the thoughts. Don't go behind the thoughts. Don't worry about the thoughts. Just come back to the breath immediately. You will be closing your eyes and meditating, and suddenly you realize you are thinking. So that moment you realize that you are thinking, immediately get your attention, your awareness back to your natural breath. Again and again, come back to your breath, come back to your breath. That is step number 3. So step number 1, step number 2, and step number 3. So in the step number 1, there are some tips. In the step number 1, you should not keep your back straight. No, don't. If you are comfortable keeping straight, then it's okay. But you don't need to keep your back straight, and you don't need to keep your body stiff in certain yogic postures and lotus postures. Meditation is to empty the mind, nothing to do with the body. So the more relaxed you are, you can sit on the floor, on a chair, on a sofa, anywhere. If you cannot cross the feet, you can stretch your feet and then cross it near the toes. So this is a precaution you need to take for the first step. And also you have to drink some water, because you don't want your throat to be dry, especially when you're doing long hours of meditation. So drink some water and then sit comfortably. So that is the first step, precaution. I'm just giving you some suggestions how to improve your meditation. And in the second step, no expectations whatsoever, because mind is very, very tricky. Mind creates certain expectations, right? So there should be absolutely no expectations whatsoever. And also when you are following your breath, when you are witnessing your breath, you have to be passive. You should not concentrate. You should not put stress in your mind that I have to focus. No, you should just sit back, relax, and become passive. Nothing to do, nowhere to go. Just sit and become inactive. Passive means you become inactive. So in the second step, you become totally inactive. And when you become inactive, the breath is already happening. So just observe it, just witness it. Bring your awareness. So either witnessing or observing or following, everything is the same. So in the second step, some of the most important suggestion is don't be active, be passive. Relax, sit back, let the breath happen. You just witness. So that is the second. And the third step, the most important thing is
Sometimes you might notice thoughts, sometimes you might notice positive thoughts, sometimes you might notice future planning, what you're going to do tomorrow. Some beautiful ideas will come, some lot of creative ideas will come, a lot of planning might come, negative thoughts might come, anything, negative thoughts, positive thoughts, miraculous thoughts, any kind of thought. You just come back to the breath. Again and again, your focus should be back on the breath. And sometimes you notice any experiences in meditation. Some people, they feel body energy sensations. Some people, they get a lot of pain. Some people, they feel the body is moving. Or some people, they see some colors, visions, whatever might be your experiences. Just witness that experience and come back to the breath. Let the experience come, let the experience go. So when you're going through certain experiences in meditation, enjoy the experience, but come back to the breath. After you enjoy the experience, come back to the breath. So this is the suggestion for the third step. So I've given you 3 steps of meditation, and I've also given you 3 tips, 3 suggestions in each and every step. That's all is meditation. And I'll tell you finally the secret of meditation. This is the most important point you have to remember. The secret of meditation, of a successful meditation, is not to open your eyes till the end of meditation. Whether there are thoughts, whether there are experiences, whether there are disturbances, body pains, no problem. As long as you are not opening the eyes, you are still successful in meditation. That is the secret. Because the mind will make you open the eyes. That is the nature of the mind. It will create some emergency and it will make sure you open the eyes. But if you don't open the eyes, and still whatever might be the disturbances and the troubles, whatever might be the mind activities, you don't open the eyes till the end of meditation. For example, you want to meditate for 1 hour. For the 1 hour, you don't open the eyes. Then slowly, you will get into meditative state. That is the secret of meditation. If you are sincere, if you are really sincere, then don't open the eyes. Meditation will happen to you very naturally. So this secret, many people don't know. That's why many people want to do meditation, but only few are successful, because the secret is not to open the eyes. Okay, friends, this is the very basics and fundamental of meditation. Okay, madam. Yes, sir. So friends, आप लोग जो भी नए लोग हमसे जुड़े हैं, आप सभी लोगों का स्वागत है। प्रदीप सर बहुत ही सिंपल तरीके से बता रहे हैं कि आपको मेडिटेशन कैसे करना है। आपको 3 स्टेप में उन्होंने समझाया है कि पहले जहां पे भी आपको कंफर्टेबल पोजीशन हो, बैठने की जगह हो सुखासन में, वहां पे आप बैठ जाइए। बिल्कुल आरामदायक स्थिति होनी चाहिए। अपने उंगलियों को आपस में एक दूसरे से फंसा लें, अपने पैरों को क्रॉस कर लें और बिल्कुल बॉडी को रिलैक्स होने दें। दूसरा स्टेप है, आप अपनी आंखों को बंद करके अपने आती और जाती श्वास को सिर्फ ऑब्जर्व करते रहें। चाहे वो सांस छोटी हो, चाहे वो बड़ी हो, जो सरल स्वाभाविक रूप से सांस आ रही है, उसी सांसों को आपको ऑब्जर्व करना है। तीसरा स्टेप उन्होंने कहा है कि आपके पास विचार आएंगे। अभी आप बिगनर्स हैं तो आपके पास और भी ज्यादा विचार रहेंगे, तो आपको न उनके साथ लड़ना है, न उनमें कोई रस लेना है। अर्थात उनके पीछे भी नहीं जाना, लड़ना भी नहीं है, और आपको चिंता भी नहीं करनी है कि कितने थॉट्स आ रहे हैं। बस आपका काम एक ही है कि आपकी जागरूकता, आपकी अवेयरनेस सिर्फ अपनी सांसों पे लगे रहे। और जैसे आप अपने सोच में फिर चले जाएंगे, आप में लगेगा कि अब मैं फिर से कुछ सोच रहा हूं, क्योंकि थोड़ी देर के बाद मन भटक जाएगा, तो बार बार अपनी अवेयरनेस को फिर से पकड़ के अपने सांसों पर लेकर आइए। ये तो उन्होंने 3 स्टेप कहे, और उन्होंने कहा कि इसके लिए आपको मैं और 3 प्रिकॉशन या टिप्स दे रहा हूं। तो उन्होंने कहा है कि आप जब भी बैठे तो अपनी रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल ऐसे तना के सीधा करके मत बैठे रहिए। आप बिल्कुल शोल्डर्स को ढीला छोड़ दीजिए। आपकी बॉडी में बिल्कुल कोई स्टिफनेस नहीं होनी चाहिए, कोई भी रिजिडिटी या कड़कपन नहीं रहना चाहिए। आप चेयर में बैठ सकते हैं, सोफा में बैठ सकते हैं, जहां पे भी बैठना हो वहां पर आप सुखासन में बैठ जाइए। आपकी बॉडी को पूरा आराम मिलना चाहिए उस पोजीशन में। कोई पद्मासन आपको लगाने की जरूरत नहीं है, और यदि आपके पैर क्रॉस नहीं हो पा रहे हैं किसी कारणवश, तो आप पैरों को सीधा भी करके बैठ सकते हैं। और पानी जरूर पीजिए और उसके बाद ही आप मेडिटेशन में बैठिए। ये पहला टिप है।
दूसरा उन्होंने कहा कि आप बिल्कुल भी उम्मीद मत करिए, अपेक्षाएं मत करिए कि मुझे इस ध्यान से क्या मिलेगा, चाहे हेल्थ हो या कुछ एक्सपीरियंस हो, कोई भी प्रकार की आपको कोई अपेक्षा नहीं करनी है, क्योंकि माइंड बहुत ही चतुर धूर्त होता है। वो आपको बार बार कोई एक्सपेक्टेशन की तरफ भी लगाएगा। तो अपने ब्रेथ की तरफ आपको फोकस करना है, और जो ये पोजीशन में आप बैठेंगे वो बिल्कुल निष्क्रिय अवस्था होनी चाहिए। निष्क्रिय का अर्थ होता है बिल्कुल भी आपको सक्रियता नहीं दिखानी है, न कोई कोशिश करनी है ब्रेथ में वो करने की, न स्ट्रेस, कोई तनाव लाना है। आपकी सांसें स्वाभाविक रूप से चल रही हैं, बस उसी सांसों को आपको देखते जाना है और बार बार अपनी जागरूकता को, अपनी अवेयरनेस को पकड़ के अपने सांसों तक के लेके आना है। तीसरा टिप जो उन्होंने कहा है कि हो सकता है जब आप बैठे तो कभी कभी बहुत अच्छे पॉजिटिव थॉट भी आएंगे, कभी मिरेकुलस थॉट भी आएंगे, कभी फ्यूचर के बारे में बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज भी आएंगे। तो माइंड इस तरीके से ट्रिक खेल सकता है आपके साथ, चाल चल सकता है। तो चाहे कितने भी पॉजिटिव, नेगेटिव, क्रिएटिव, मिरेकुलस कोई भी आपको विचार आए, आपको उनको कुछ भी रस नहीं लेना है, सिर्फ अपने फोकस करना है अपनी अवेयरनेस को अपने सांसों के प्रति। और इस समय हो सकता है आपके शरीर के किसी भाग में दर्द हो, आपको कुछ कलर्स दिखे, आपको कुछ अनुभव हो, कुछ लोग दिखे, जैसे भी अनुभव आपको हो रहे हैं, आप सिर्फ उसको एक साक्षी भाव से उस अनुभव को देखिए, एंजॉय करिए, पर फिर से वापस अपने ब्रेथ में आइए। मेडिटेशन का सबसे अच्छा सीक्रेट है कि जितनी देर के लिए आपको मेडिटेशन के लिए बैठाया जा I think नेट का थोड़ा सा इशू हुआ है मैम का। शी विल बैक, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड। Okay, I think it's the last point. Kim ji, आप translate कर सकते हैं. The secret of meditation is not to open the eyes. Pardon, sir. I was. What was the last point? So I think she spoke everything, but the last point is the secret of meditation. The secret of a successful meditation is not to open the eyes at any cost. Okay. मेडिटेशन का सक्सेस यानी सीक्रेट अगर आप जानना चाहते हो, यानी गुपित जिसे आप अचीव करोगे, तो आपकी आंखें नहीं खोलना है, आंख बंद करके ही रखना है पूरे मेडिटेशन के टाइम, आंख नहीं खोलना है। दैट इज व्हाट ये सीक्रेट है, बिल्कुल एक की है आपको। Okay. So if you want to meditate for half an hour, you should never open the eyes, whatever might be the case. So you prepare yourself, switch off your mobiles, lock your room, darken the space, and then you start the meditation. So there should be no excuse to open the eyes. And whether the meditation is also very disturbing, still you don't open the eyes. That is the secret. So अगर आधे घंटे के लिए आप मेडिटेशन करते हो, आधा घंटा या कितना भी वक्त, तो पूरे टाइम आपको आँख बंद करके रखना है, और आप रूम बंद कर लीजिए, पूरा डार्कन कर लीजिए, बहुत कम लाइट हो या नहीं हो तो अच्छा है, कोई भी डिस्टर्बेंस आए आँख बंद करके रखना है। खुद को पहले प्रिपेयर कर लेना है मेडिटेशन के लिए, जैसा कि आपको पूरा वॉशरूम रेस्टरूम जाना है, जाके आओ, कोई रूम पूरी डार्कन करो और आँख बंद करके बैठ जाओ। कोई भी डिस्टर्बेंस आए तो आँख बंद करके ही रखना है, डिस्टर्बेंस से डिस्टर्ब नहीं होना है, तो आपका ये सक्सेस है, आपका मेडिटेशन कंटिन्यू होगा। आधे घंटे के लिए बैठ रहे तो आधा घंटे तक आपको आँख नहीं खोलनी है, कुछ भी हो जाए। Okay, so let us do some experiment. I know some people are new, they have some questions, they have raised their hand, but we will take all your questions. You don't need to worry. All right, so let us do half an hour experiment, half an hour meditation. For half an hour, please don't open your eyes. Sit back, relax, close your eyes and be with your breath. Don't open your eyes. That is the most important in meditation. Don't open your eyes. Let us all do meditation for half an hour, and after that we will take your questions and then discuss about the retreat. So let us start the meditation. Sir, Neeta ma'am has joined, and yes sir, It's okay. She will continue. तो हम आधे घंटे के लिए प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि बहुत से नए लोग भी ज्वाइन हुए हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा बताना ज़रूरी है। जो हमने बताया वो फॉलो करेंगे, आधे घंटे के लिए प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद में हम लोग
क्वेश्चन आंसर्स लेंगे। सो आप सबके सब प्रिपेयर हो जाओ मेडिटेशन के लिए। सबको पता है अभी किस तरीके से प्रिपेयर होना है, ठीक है? So drink some water. If you are wearing if you are wearing specs, eyeglasses, remove the eyeglasses. And we remove the eyeglasses because we don't need to wear when you are closing the eyes. And also towards the end of meditation, before you open the eyes, you should not open straight away. So you should always place your fingers, your hands on your eyes for 10 seconds, and then you open your eyes. So it has to be a very gentle process. Drink some water, sit comfortably, remove the specs, and let us start meditation. There will be a gentle background music. The music helps in meditation. So let us do for half an hour meditation, friends. थोड़ा सा पानी पी लीजिए और आग बंद करते वक्त आग बंद करना है, और चश्मा अगर पहना है किसी ने तो निकाल दो, क्योंकि हमें मेडिटेशन करते वक्त चश्मे की ज़रूरत नहीं है। म्यूजिक चलते रहेगा ड्यूरिंग द मेडिटेशन, और जैसे ही मेडिटेशन खत्म होता है इमीडिएटली आँख नहीं खोलना है। दोनों हाथ आंखों पे इस तरीके से रखना है थोड़ी देर के लिए, 5 सेकंड के लिए, और उसके बाद में धीरे 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 खोलना है। और अब हम मेडिटेशन स्टार्ट कर रहे हैं, तो सारे के सारे only 30 minutes. Only 30 minutes. Nobody open your eyes. Enjoy your breath. Go with your natural breath. Just observe it, witness it, flow with it. That's all. आधे घंटे के लिए मेडिटेशन करेंगे। अपने सांस पे फोकस करना है, सांसों पे, और उसको ऑब्जर्व करना है। बाकी कोई थॉट नहीं लाना है, बस उसके साथ ही हमें आगे बढ़ते जाना है, अंदर आने वाली श्वास और बाहर जाने वाली श्वास के साथ। So let us start. Okay, Close your eyes. Let us start and let us enjoy. The meditation should be very joyful. So no stress, no worries. Let us enjoy. It should be a happy moment when you are meditating. A smile on your face. Let us begin. Nowhere to go, nothing to do. Let us be with our own breath. Let us enjoy to be with our own breath, my dear friends. Only 30 minutes. Please don't open your eyes. जब तक न कहा जाए अपनी आंखें बंद ही रखिएगा। पूरा ध्यान अपनी आती और जाती श्वास पर।
Final 10 seconds. आखिरी 10 सेकंड. Gently place your hands on your eyes. Five, 4, 3, 2, 1. Save. You may slowly open your eyes whenever you are ready. And drink some water. मेडिटेशन के बाद थोड़ा पानी पीना एक अच्छा हैबिट है, अच्छा प्रैक्टिस है. थोड़ा पानी पीजिए. थैंक यू सर, थैंक यू. सॉरी, थोड़ा नेटवर्क इशू हो गया था. Okay. Okay, madam. So now I think some beginners have joined, so we have started with meditation. Yes, sir. I said half an hour, but I dragged it to 45 minutes. So 45 minutes meditation, friends. So this is a new series, a new beginning, but we will integrate all the good things from the previous retreat. But the new chapter in this will be, the new additions will be raw foods. We will practice 1 week full of raw foods. And also we will practice 2 days per week mauna, silence, every Saturday, Sunday. Okay, so we have 3 weeks, and every week Saturday, Sunday, we'll be practicing mauna. How to practice mauna and what to do, I'll let you know. But first, to understand, we have 3 weeks, so we are splitting the 3 weeks into 3 kinds of themes. So the first one this week is Buddha Purnima is coming on Wednesday. So any full moon is a powerful day for meditation because you have a lot of cosmic energy. The day before the full moon and the day after the full moon, they are amazing days, especially for meditation. These 3 days have a lot of cosmic energy. And when you do meditation in these 3 days, you get more cosmic energy. And also during full moon, a lot of your emotions flare up. You see, during the full moon, the tide is very high in the ocean because the water gets affected by the moon energies. So that's why you see on the full moons, the oceans, the waves are very high. And even in our body, around 80% is water. So we also get affected on the full moons. How we get affected? Through emotions. Our emotions will be swinging on the full moons. So when you meditate on full moon, you will not only be very balanced in your emotions, you will be very positive, and also you will get more cosmic energy. And this coming week is a Buddha Purnima. That means it is the day the Buddha has been born, and the day the Buddha got enlightened, and the day the Buddha vacated his body. So all the 3 days happened this full moon. So it's a very special day. And for this full moon, which comes on Wednesday, it's a recommendation that we will be all on liquid diet. So that means you can take only juices on that particular day. So only on Wednesday, so you will be fully with the liquids. And you can take any juices you want, honey lime, orange juice, lemon juice, apple juice, any kind of juice you want, you can take. And I want you to experiment. On the full moon, you are on the liquid diet and you are doing intense meditation. And also, apart from the Saturday, Sunday mauna, we will also practice mauna on the Buddha Purnima. So Wednesday, we will be not having any, even on our session, there won't be any translation. I won't be speaking much, so we will do an intense meditation. So I want all of you to experiment on this full moon day. So on this full moon day, be totally on the liquid diet and be on mauna, and
tell your family members, your colleagues that you will be on Mauna on that particular day. Beforehand, you tell them, you let all your loved ones, your friends, your family members know, so that nobody disturbs you. And in case of any emergency, you can always write down and show them as a communication. Okay, so practicing Mauna is a very important spiritual practice. So yesterday we said this new retreat will be a mission yogi, right? So all the yogis, they practice Mauna. It's a great energy. You save a lot of energy. And the more you practice Mauna, the more you start witnessing your emotions. The more you start healing yourself, the more the transformation happens. You will understand that you waste too much energy by speaking. And also the more you practice Mauna, the more you develop the habit of listening. So Mauna has very, very important spiritual significance. So on Wednesday, we will practice Mauna, only on this Wednesday because it's a full moon. But every Saturday, Sunday, we will practice Mauna. And the second week, the first week, it's your choice. You can continue with the fruit diet, you can continue with the liquid diet, or for the beginners who are first time coming to this retreat, so you can take 2 meals a day. For this first week, you can take 2 meals a day, except Wednesday. So you can take 2 meals a day, and even you're eating, the yogic way of eating is you are eating half belly, you're not eating full. So again, this is a mission yogi. So we want to be a self-realized person. So you're not going to eat belly full. You're going to eat half, and you can eat 2 times. And before sunset and after sunrise. So the first meal will be anytime after sunrise, and the second meal will be anytime before sunset. So this we will follow. So this will be the first week. The second week will be raw foods. That means you can eat cucumbers, carrots, vegetables, fruits, juices, nuts, anything you want directly from the nature. No cooked food. Everything is raw. You can take smoothies, you can take juices, you can go to the YouTube and try to prepare beautiful salad. Enjoy yourself and enjoy every possible fruit the earth gives, the nature gives. Enjoy every possible salads and vegetables. Make your life happy by enjoying that aspect of raw foods. So the second week will be the raw foods. And as usual, the third week will be liquid diet. So this will be the first, second, and the third week of diet. But I'll go in detail how to practice Mauna also. So let Neeta madam translate this. Sir, I have one doubt, sir. हम लोग जो अभी liquid diet से बाहर आए हैं, तो अभी हम लोग तो 2 meals नहीं किए, अभी भी हम लोग 1 meal ही लें. It's your choice until Tuesday. Today, tomorrow is your choice. Wednesday, you have to be on the liquids. One day, Wednesday, one day on full moon, you have to be on liquids. But this week, it's because you've been, for the people who have joined the first retreat, I know they want to eat certain delicious foods. So this week, I have kept it open so you can cook all your favorite dishes and eat this week. Enjoy the food mindfully. Yes, yes. But you also notice when you do the detox diet, then you know the value of food. Then you enjoy the taste of the food. Yes, yes, sir. Sir, बहुत अच्छे से समझ गए कि अन्न ब्रह्म होता है. So, friends, so you should always let the hunger. You see how to enjoy life, how to enjoy the taste of the food is you should develop the hunger. There should be some hunger inside your body. All the time there should be some hunger. Then only you will enjoy the food to the fullest. Only when you're hungry, you will enjoy the food to the maximum. Okay, so this detox is going to help you to enjoy more food, to enjoy your life to the fullest. Yes, 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 sir. तो फ्रेंड्स, सर ने 3 हफ्ते का पूरा शेड्यूल बना के दिया हुआ है, और जो न्यू मेंबर्स हैं उन लोगों के लिए उन्होंने कहा है कि आप लोग को मैं 3 वीक्स का पूरी 3 थीम्स बता रहा हूँ, पर आप लोग के ऊपर चॉइस है कि आप पहले हफ्ते में क्या चूज कर रहे हैं. इस हफ्ते में हमारे को बुद्ध पूर्णिमा आने वाला है, फुल मून.
पूर्णिमा के एक दिन पहले और एक दिन बाद सबसे ज्यादा कॉस्मिक एनर्जी रहती है, तो वो 3 दिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ज्यादा से ज्यादा हमें ध्यान करना है और हमारे इमोशंस इस समय सबसे ज्यादा बाहर आते हैं, क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं जब चंद्र पूरा रहता है तब ज्वार भाटा आता है समुद्र में। चूंकि हमारे शरीर में भी 80% पानी है, इसलिए हमारे इमोशंस बाहर निकलेंगे। तो आपको इस समय अपने इमोशंस को बैलेंस रखना है, पॉजिटिव रखना है और ज्यादा से ज्यादा कॉस्मिक एनर्जी लेना है। इस दिन बुद्ध पूर्णिमा के दिन भगवान बुद्ध जन्म भी लिए थे। वो इस दिन एनलाइटन भी हुए थे और इसी दिन उन्होंने अपना शरीर भी त्यागा था। ये बहुत स्पेशल डे है और इसलिए उस पूरे दिन सभी लोगों को लिक्विड डाइट पे रहने की सलाह दी जाती है। सिर्फ जूसेस पीजिए, जो भी प्रकार के आप वेजिटेबल फ्रूट जूस जो भी आप ले सकते हैं वो जूस पीजिए। ये एक्सपेरिमेंट करिए, क्योंकि उस समय हम सबसे ज्यादा इंटेंस मेडिटेशन करेंगे और सबसे ज्यादा आपकी हीलिंग के चांसेस हैं। और उस दिन हम बुद्ध पूर्णिमा के दिन मौन रखेंगे। ऐसे तो हम मौन हर सैटरडे और संडे को रखेंगे, पर बुद्ध पूर्णिमा इतना ऑस्पिशियस, इतना पवित्र दिन है कि उस दिन हम उस पूरी एनर्जी को अच्छे से यूज करना चाहेंगे। तो उस दिन हम लिक्विड डाइट पे रहेंगे, मौन रहेंगे और मैं भी कम बोलूंगा उस दिन, और नीता को भी ट्रांसलेशन नहीं करना पड़ेगा। तो अपने परिवार वालों को, अपने प्रियजनों को, अपने फ्रेंड्स लोग को लिख के पहले से ही उनको बोल दीजिए कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन आपको कॉल नहीं करे, कोई डिस्टर्ब नहीं करे। और यदि आपको कोई इमरजेंसी आ रही है, परिवार में बोलने की बहुत ज्यादा जरूरत पड़े, तो आप लिख कर दें। पर उस दिन आपको सिर्फ मौन की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये सेकेंड में जो रिट्रीट है उसका नाम ही हमने मिशन योगी बना के रखा है। तो इसका यह अर्थात है कि हमको योगी बनना है और योगी लोग सबसे ज्यादा मौन साधना करते हैं। तो आपको मौन साधना करने से बहुत फायदा होगा। आप साक्षी भाव से अपने इमोशंस को आते और जाते हुए देखेंगे। इससे आपकी हीलिंग तेज होगी और ट्रांसफॉर्मेशन अच्छा होगा। बोलने में हमारी एनर्जी बहुत वेस्ट होती है, इसलिए जब आप मौन रखेंगे तो आपकी सुनने की क्षमता भी बढ़ेगी। इसीलिए मौन को बहुत महत्वपूर्ण कहा गया है। और नए लोग जो अभी पहले हफ्ते में जुड़ रहे हैं वो 2 मील्स ले सकते हैं, पर याद रखिए योगी बनने के लिए भरपेट खाना नहीं है, सिर्फ आधा पेट भर के ही आपको खाना है। तभी आप अपने आप को पहचान पाएंगे। सूर्यास्त के पहले और सूर्यास्त के बाद, सूर्यास्त के मतलब सनसेट के पहले आप भोजन कर लीजिए और सुबह सूरज उगने के बाद आप भोजन कर लीजिए। 2 टाइम आपको खाना है। और जो सेकेंड वीक रहेगा इस हफ्ते के बाद वाला, उसमें हमको सिर्फ कच्चे पदार्थ खाने हैं, सिर्फ रॉ मटेरियल। मतलब फ्रूट्स भी आपको खाना है बिना पके हुए, सब्जियां भी आपको कच्ची ही खानी है। ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं आप, जिस भी प्रकार से स्मूदी, सैलेड, फ्रूट सैलेड, वेजिटेबल सैलेड जो भी लेना चाहें आप ले सकते हैं। आप लाइफ को एंजॉय करिए, पर हर चीज रॉ लीजिए, क्योंकि रॉ फूड्स में सबसे ज्यादा प्राण शक्ति होती है। थर्ड वीक जैसे पिछले बार हुआ था, पूरा हम लिक्विड डाइट पे रहेंगे और हर सैटरडे और संडे को हमारा मौन रहेगा। इस हफ्ते हमारे 3 दिन मौन है। तो फ्रेंड्स आप लोग इसको फॉलो कर सकते हैं। और जो पेशेंट हैं, जो कुछ मेडिसिन ले रहे हैं, वो अपने डाइट को आपकी बॉडी के अनुसार अपने आप को समझ के थोड़ा सा वेरीफाइड कर सकते हैं। पर सर बार बार कह रहे हैं कि अगर दवाई भी लेनी हो तो पेट भर के नहीं खाना है, थोड़ा सा खा के फिर आप दवाई ले सकते हैं। Thank you, sir. Okay. Just I want to tell you that even for the people who have diabetes, they can eat fruits, they can eat juices. And we have done experiments in our own retreats. We have done experiments where the diabetic patient completely got healed, just by doing more meditation. Only meditation heals you, but you should have trust in it. You should have faith in it. You should have faith in the process. So when you take fruits regularly, and you drink plenty of water, the most important thing is for the next 3 weeks, you will be taking 5 to 6 liters of water every day. Okay, that is very, very important. And more you drink water, more you flush out all the toxins from your body. And even the people who are having blood pressure, diabetes, they can follow the fruit diet. They can take all kinds of fruits. They can take all kinds of nature foods, salads, nuts. See, nature is always healing. When you eat the foods of the nature, it will heal you, right? And
If you're taking certain medicines, then you just be mindful about your progress and listen to your body and act accordingly. But I have seen many cases where they have healed their blood pressures and diabetes and everything just by following a simple diet and by practicing more and more meditation. But and I also have seen few people who, in spite of doing meditation, they didn't heal. I have seen both categories. So what is the difference? The difference is the faith and the trust. So you should have trust in it and you should have faith in it, and you follow what you feel is good in your heart. That is more important. Okay, and I will also share the video where I think for the newcomers, there are a lot of newcomers, they don't know what the retreat looks like. But in my physical retreat, people meditate for 10 hours a day. People meditate for 10 to 12 hours a day, and I will be supervising them. They cannot open their eyes, and each meditation goes to 2 to 3 hours at a stretch. So they meditate for 10 to 12 hours a day, and they practice 6 hours of mindfulness, and they will be only on honey lime juice, no other juices also. Only the first day they arrive, they eat. The last day before they go, they eat. The rest of the days, they are fully on the liquid diet, and they enjoy the process, and they pay a lot of money to come and to take this retreat. Okay, so these people, they know the value of it. And also the complete pin drop silence, one person in one room and no eye contact. This is also one of the rules of my retreat, that they should not even have eye contact. They cannot see another person in the retreat also. They can see the birds, they can see the nature, but they cannot see another person because there's so much of emotional healing happening. So they're 24/7, they're focused on inside. So they transform themselves, they become a master. And most of my students who come, they are already teachers, they're already spiritual teachers, they are healers. They are great healers, they are great angel workers, tarot card readers and doctors. And a lot of people who come to me, they're already teaching, but they know many things theoretically, but they want to experience the real enlightenment. So that's why I call this retreat the self-realization retreat. I do it only physically, but now virtually we are doing it. So once Anita Madam translates, I will also show the video, and you can see in the physical retreat, there is no eye contact, 12 hours of meditation and complete silence. So that's a deeper transformation. But now in virtually, we can still do it. Being with our home, we can make our home our ashram. And the virtual retreat has its own benefits, because in the physical retreat, it's like a holiday. It's like a spiritual holiday. Nobody to disturb you. It's only you. But here, because you are with your relationships, with your family and with your children and all the things, so you will be facing a lot of challenges. You will do meditation here, you will understand law of karma, you will understand many things, but immediately the test comes within the family. Lot of tests, lot of challenges comes within the family. So how you integrate your learning within your relationships, that matters. So while doing this virtual retreat, there is a disadvantage and also there is a greater advantage. So the disadvantage is you are not on a spiritual holiday and you are not in a completely isolated space where there is a lot of energy, the cocoon, the ball of energy, and that advantage is not there. But the greatest advantage you have is the integration happens very simultaneously. How spiritual you are, you will come to know immediately within your family. So the integration is also very great. So that is the greatest advantage. Once again, I tell you, to be a spiritual person means not to have special gifts. To be a spiritual person means you are simple, you are humble, and you are nice, compassionate, loving being. That is a definition of a spiritual person. A spiritual person means you are a compassionate being. You are compassionate to every animal. You are compassionate to every living being. You don't want violence. You don't want killing. You want compassion. You want to radiate compassion to all the living beings and to all the humans, friendship.
And to all the relationships, friendship, you have to make all your relationships beautiful. And you have to enjoy the middle part, right? How to be a better version of yourself, how to be authentic. Authenticity means what you think is what you speak is what you do. This is authenticity. If you call yourself a spiritual person, that means you have to be authentic. You have to be true to yourself. You have to be very honest to yourself. You have to be very authentic to yourself. So this is the definition of spirituality. Not just because you are meditating for so many years, you call yourself a master, but you are not authentic. There is no ethics. This is not spirituality. Spirituality reflects within you and around you. So friends, this retreat is going to be a little more intense, and this retreat, the previous retreat, you have enjoyed the benefits of diet. You have enjoyed the benefits of mindfulness. So in this retreat also there is diet, and there is also mindfulness, and there is book reading. All those aspects of the previous retreat are still there, but on top of it, there is complete raw foods, and also there is complete silence. So this is something new which we will integrate it, and also we'll do very intense meditation. सर जर्नल्स के लिए बताना है क्या? जर्नल्स लिखने के लिए? Yes, that we will cover. The previous ones also we will cover. So you can cover that. You can speak all the previous retreat, whatever we did, like mindfulness and how to do mindfulness. We will cover one by one. So mindfulness, reading books, all those aspects are there. If you want to be a self-realized person, this should be there. Okay, madam, you can सर अभी मैं बता भी देती हूँ और मैसेज भी डाल दूंगी ग्रुप में. तो फ्रेंड्स, सर ने कहा है कि जो भी डायबिटीज वगैरह जिनको है और जिनके मन में ये भय रहता है कि वो फ्रूट्स नहीं खा पाएंगे क्योंकि डॉक्टर्स लोग मना करते हैं, तो आप बिल्कुल भी फिक्र मत करिए. आप कोई भी फ्रूट्स जूस ले सकते हैं. जब ज्यादा आप मेडिटेशन करेंगे और इस मेडिटेशन पे आप भरोसा करेंगे तो आपको जरा भी ये नुकसान नहीं करेगा. 5-6 लीटर आपको रोज पानी पीना है. सिर्फ डायबिटिक नहीं, ये हर एक के लिए है. जो पहले हमने मेंशन नहीं किया, 5-6 लीटर पानी पीना जरूरी है ताकि हमारे शरीर के जो भी जहरीले तत्व हैं, टॉक्सिन है, वो बाहर निकल जाए. और डायबिटीज लोग फ्रूट्स जब खाएंगे और नट्स लेंगे तो बिल्कुल एश्योर रहिए कि कोई भी उनको नुकसान नहीं होगा और उनकी हीलिंग अच्छी होगी. दवाई लेने के लिए उन्होंने कहा है कि दवाई आप ले सकते हैं, पर माइंडफुली अपने प्रोग्रेस के प्रति आप अवेयर रहिए और मेडिटेशन ज्यादा से ज्यादा करिए. इन्होंने ऐसे लोगों को भी देखा है जिन्होंने मेडिटेशन नहीं किया है पर उसके बावजूद फ्रूट्स वगैरह खा के और अपने आप पर भरोसा रख के भी अपने आप को ठीक किया है. तो उन्होंने कहा है कि आप जैसे दवाई ले सकते हैं, जो भी फ्रूट्स आपको पसंद है वो खा सकते हैं. अपने दिल की बात सुनिए. जब वो अपने फिजिकल रिट्रीट, मतलब भौतिक रूप से जब वो ऐसा रिट्रीट कराते रहे हैं पिरामिड वैली और जगह जगह और कहीं राजस्थान वगैरह में, तो वो बताते हैं कि वहां पर जब लोग इकट्ठे होते हैं तो 10 से 12 घंटे वो लोग मेडिटेशन करते हैं. एक मेडिटेशन उनसे 2 से 3 घंटा लंबा चलने वाला रहता था. 6 घंटा उनका माइंडफुल का क्लास रहती थी कि वो पूरे टाइम माइंडफुल रहें. और वो लोग सिर्फ हनी लाइम वाटर पे ही रहते थे. पहले और आखिरी दिन उनको भोजन दिया जाता था, बाकी पूरे दिन वो सिर्फ नींबू और शहद के पानी में ही रहते थे. उन लोग बहुत एंजॉय करते थे अपनी इस स्पिरिचुअल ट्रिप को और ट्रांसफॉर्म काफी लोग हुए. काफी लोगों की इमोशनल हीलिंग भी हुई. मैं एक रूम में एक ही आदमी रखता हूं ताकि कोई किसी को आई कांटेक्ट नहीं करे, क्योंकि इस समय इमोशनल हीलिंग सबसे ज्यादा होती है. और ये मेरे जो इस फिजिकल रिट्रीट में लोग आते थे वो हीलर्स थे, स्पिरिचुअल टीचर्स थे, एंजल्स और टैरो कार्ड रीडर्स थे. उन सभी को एनलाइटनमेंट का अनुभव टेस्ट कराने के लिए, मतलब अनुभव को चखाने के लिए मैं इनको ऐसे फिजिकल रिट्रीट में लेके आता हूँ. पर चूंकि अभी वर्चुअली हम कर रहे हैं, सब आप लोग अपने घर में रह रहे हैं, आप लोगों के घर को ही आप लोग आश्रम बना लीजिए. आपके लिए ये स्पिरिचुअल हॉलिडे तो नहीं है. आप लोग के परिवार, बच्चे हैं, आपको काफी चैलेंजेस अभी आ रहे होंगे, आपको काफी टेस्ट देने पड़ रहे होंगे, क्योंकि एक तरफ मेडिटेशन करना है, दूसरी तरफ आपको डाइट भी फॉलो करनी है, साथ में उनकी फरमाइशें भी पूरा करना है. तो ये आपके लिए बहुत बहुत अपॉर्चुनिटी है, ये अवसर है कि आप अपनी लर्निंग को इंटीग्रेट करिए, सबको सम्मिलित कर लीजिए और अपने रिलेशनशिप के जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं उसको माइंडफुली आप अवेयर होके पूरा करिए.
सर ने कहा है कि स्पिरिचुअल पर्सन वो नहीं होता है जो मेडिटेशन करता है या स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ता है। स्पिरिचुअल पर्सन वो होता है जो सभी को प्यार करता है, ऑथेंटिक होता है, सिंपल रहता है, करुणा से भरा होता है, उसके मन में कोई भी हिंसा की भावना नहीं होती, सभी लोगों के प्रति उसकी करुणा रहती है। वो अपने हर रिश्ते को अपने दोस्ती में बदल देता है, फ्रेंडशिप में बदल देता है और मध्यम मार्ग में चलता है। वो अपने से बेहतर और बेहतर बनने की कोशिश करता है। ऑथेंटिक का अर्थ होता है जब मन, कर्म और वाणी सब एक ही हो, जो बोले, जो सोचे और जो हमारे एक्शन हो, जब एक ही अलाइन होते हैं, एक ही तरफ होते हैं, उसे ही मैं ऑथेंटिक और ईमानदार कहता हूँ। वही आदमी आध्यात्मिक है। कई लोग मेडिटेशन करते हैं पर उनके कोई एथिक्स नहीं होते, कोई उनकी ऑथेंटिसिटी नहीं होती, तो आप उनकी परवाह मत करिए। आप लोग अपने आप का बेहतर वर्जन बनाने की तरफ आप अपना फोकस करिए। इस रिट्रीट में हमारा मेडिटेशन बहुत ज्यादा इंटेंस होगा। आपको माइंडफुलनेस की भी प्रैक्टिस करनी है। जो भी आप काम करें, चाहे कुकिंग हो, चाहे आयरन कर रहे हो, चाहे आप नहा रहे हो, छोटे से छोटे कृत्यों को भी आप माइंड और बॉडी को एक साथ रखिएगा। जो भी आप कर रहे हैं पूरा आप प्रेजेंट मोमेंट पे रह के उस काम को करिए। इससे 3 फायदे होंगे आपको। आपको थकान कम लगेगी, आप उस चीज को एंजॉय कर पाएंगे और वो काम पहले से ज्यादा बेहतर रूप से कर पाएंगे और आपकी एनर्जी भी सेव होगी। तो इतने फायदे हैं माइंडफुल के। तो आज से छोटे छोटे कृत्यों को आपकी डेली रूटीन्स में आप माइंडफुलनेस को यूज करिए। बार बार आप टूटेंगे, बार बार आपसे छूटेगा, मुझसे भी छूटता है। थोड़ी देर के बाद हम कोई दूसरा काम करने लग जाते हैं और मल्टीटास्किंग की तरफ चले जाते हैं, सोचने लग जाते हैं दूसरा। बार बार अपनी अवेयरनेस को माइंडफुलनेस के तरफ लेके आइए पूरी जागरूकता के साथ। दूसरा, सर ने कहा है कि रोज आपको कम से कम 1 घंटा बुक पढ़नी जरूरी है। कोई भी स्पिरिचुअल बुक आप लीजिए, 1 घंटा पढ़िए। चाहे आप कितने भी जूम सेशन अटेंड करते हो, आपका पढ़ाई पढ़ना बहुत जरूरी है। तीसरा, उन्होंने कहा है कि आप एक डायरी बना लीजिए। जो भी आपके दिन भर में आपने माइंडफुल कितना अपने आप को अचीव किया, कहाँ कहाँ पर आपकी चूक हुई, शायद नहाने में चली गई हो, चाहे आपके खाना बनाने में चली गई हो, जहां जहां पे आप चुके हैं आप सबको लिखिए और आपके ध्यान के अनुभव भी लिखिए। हो सकता है आपको कुछ दिखे या एनर्जी का आपका शिफ्टिंग हो। तो जो भी आपका पूरे दिन भर की दिनचर्या है उसको रोज रात को आपको डेली के डेली लिखना है। सिर्फ आप हमको दिखाने के लिए या प्रदीप सर को दिखाने के लिए आपको नहीं करना है। आपको अपना इंट्रोस्पेक्शन करना है कि इस 21 दिन में आप कहाँ कहाँ पर चूके और कहाँ कहाँ पे आपने प्रोग्रेस की। तो आपको बुक भी पढ़नी है, 5 से 6 लीटर पानी पीना है, डाइट फॉलो करना है, जर्नल्स लिखने हैं और माइंडफुल रहना है। थैंक यू सर। Okay, so for the people who feel like, wow, it is too much, I cannot do it. So don't worry. Just start with one thing at a time. Start with, anyway, we'll be doing group meditation here. And then we just focus on mindfulness. Okay, first one step at a time. First focus on mindfulness, then slowly focus on diet, then slowly focus on book reading. Like that you can improve step by step. Okay, so the recommendations are there, but you follow according to your own comfort. But it is good to experiment everything. This opportunity is there for you to experiment. Unless you experiment, you don't know what benefit you get. So take it as an experiment and go with the flow. Take as per your comfort. But for the people who follow everything, then there is a great transformation. तो सर ने कहा है कि आप लोग घबरा मत जाइए कि इस रिट्रीट में इतने सारे काम दिए जा रहे हैं तो हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। उन्होंने कहा है कि आप अगर नए हैं तो आप माइंडफुलनेस के साथ पहले शुरुआत करिए, फिर आप डाइट की तरफ ध्यान दीजिए और बुक्स अगर नहीं भी पढ़ पा रहे हैं तो अगले हफ्ते या थोड़े दिनों के बाद आप शुरू करिए। आप जो भी आपको जो कंफर्ट लग रहा है उसी को ही फॉलो करिए। एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे इसको जरूर ट्राई करिए। फ्लो में रहिए, आपको जो भी कंफर्ट लग रहा है, पर यदि आप इन सभी चीजों को फॉलो करेंगे तो आप में अद्भुत रूप से ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। Okay, and also some of the common questions which we addressed in the previous retreat is, yes, you can take all herbal tea, yes, any kind of tea, or this kashayam or whatever you can call.
fusions of any herbals, you can take in the liquid form. There's absolutely no issues with that. And yes, you can take nuts also. You can soak almonds, badam, and you can take 5 to 10 almonds every day, soaked almonds. You can take all varieties of dry fruits. You can eat everything. For the first week, you can eat everything. Even for the second week, you can eat everything natural food. Only for the third week, we focus on juices. Okay, so the first 2 weeks, you can enjoy as much as possible. But coffee, tea, no, we don't allow coffee, tea. But if somebody says, no, I'm missing my coffee, tea, then only for the first week, yes, you are exempted. But from the second week and third week, no coffee, tea. But if you can avoid coffee, tea even in the first week, that will be great. And even when you're taking, don't drink a glass full, just take a sip so that you are not tempted, you are not deprived of it. Okay, so drinking coffee, tea is not a bad thing. But when you're experimenting, when you're going through a detox process, it is better not to take coffee, tea. And once the detox finishes, you can still have coffee, tea, but you will enjoy it. You will enjoy the coffee, tea the most, and you will not drink too much. So it's just an experiment. So during the detox, no coffee, tea. After detox, you can enjoy coffee, tea. तो सर ने कहा है कि आप इन तीनों हफ्ते में हर्बल टी, काढ़ा या कोई भी हर्ब्स के फ्यूजन मिला के जो आप पीना चाहते हैं आप पी लीजिए। आप कोई भी सीड, नट्स वगैरह खा सकते हैं। 5 बादाम भीगे हुए रोज खाइए, पहले हफ्ते भी, दूसरे हफ्ते भी। आपको सभी चीजें खानी है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप नहीं खाइए। परंतु हाँ, जब आप डिटॉक्सिफिकेशन कर रहे हैं तो कॉफी, टी आप पहले हफ्ते से ही बंद कर लीजिए। पर आप बहुत ज्यादा आदी हैं तो पहले हफ्ते में थोड़ी रियायत दे सकते हैं, ज्यादा मत पीजिए। 1-2 सिप पी के अपनी टेम्पटिंग को हटा लीजिए। पर सेकेंड हफ्ते से आप बिल्कुल भी ये टी या कॉफी वगैरह नहीं लेंगे, क्योंकि ये डिटॉक्सिफिकेशन की प्रक्रिया है। और एक्सपेरिमेंट जब आप कर रहे हैं, जब इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे, फिनिश कर लेंगे, तो आपको बिल्कुल टी और कॉफी अलाउड हो जाएगा। और यकीन मानिए तब आप इसको ज्यादा एंजॉय कर पाएंगे। And then when you're drinking juices, no sugar, no salt. Okay, you can add honey if you want. You can add dates. You can add dry fruits in your milkshakes. Not milkshakes, in any of your juices. But no sugar and no salt. उन्होंने कहा है कि जूस में कोई भी नमक और शक्कर बिल्कुल भी मत डालिए। आप शहद मिला सकते हैं बस, और शुगर, शक्कर नहीं लेना है। Okay, and also some people were asking yesterday about certain questions about milk. They were living overseas. That there is a lot of cruelty towards animals, factory farming. You see, what I used to do when I was living overseas, when I was living in Australia, I was a vegan because I don't want to take that milk with full of suffering. The cows are slaughtered. I don't want to take that food. It has a lot of pain and suffering. So I was a vegan for many years. For 4 years, I was a vegan. Then whenever I used to come to India, I know in India, the cows are treated with respect. We call mother, the cow as ma. And then every cow in India is treated with respect. And so in India, you can buy the milk from the trusted sources where there is cooperative. You can buy from the farmers, or you can buy from the cooperative dairies where they collect the milk from the farmers. And every farmer is treating the cow with respect. And in villages, how it happens in India, in villages, every house has a cow, 1 or 2 cows. So they take the milk for their family, and the rest of the excess milk, they put it for the cooperative dairies. So most of the milk in India is with having a good energy. So I don't think there is any cruelty in India, but it is better you take from the trusted sources where it is organic, and the cow is also treated respect. And for the people who are living overseas, you can do a bit of research, and there are goshalas in India where they take care of the cow, they bathe the cow every day, they worship the cow, they really feed them well, and they pray to them every day with respect. And you can use that kind of milk powders if you want, who are living in overseas like Canada, US, and other parts of the world.
So I used to get milk from certain goshalas, desi cow goshalas from Rajasthan and Gujarat. So you will get it. So you have to do a little bit of research, you will get it. But it is better you drink the desi milk, which is the A2 milk. The A2 milk is the desi milk, which has the hump. The cow has a hump in it. The hump is in the back. So the hump absorbs the cosmic energy, and it has medicinal value also. And the milk you get from the Jersey and all those HF breeds, it doesn't have, it's not a desi variety, and it's called A1. It's called A1 milk, and this A1 milk is not healthy. So I leave it to you to do your own bit of research. If you want to be a vegan, that's your choice. But if you still want to drink milk and take yogurt, then do a bit of research to get desi milk, which is A2 variety, and where the milk is coming from, the cows where it is treated with love and respect, not with cruelty. So you do a bit of research and you go with it. So you have a choice of being a vegan, or still you want to take milk, make sure you get from the trusted sources. And also, instead of drinking as a milk format, always better to drink as a fermented, like buttermilk or yogurt. Always it's better, because the milk protein is very hard for our body to break into it and absorb. So better to take as a yogurt or buttermilk, ghee, everything is fine. So avoid taking the milk directly. So always buttermilk and yogurt is fine. So it's all your choices. There is no hard and fast rules. It's all your choices. There is a recommendation, but you do what you feel like doing. But don't get the milk from the supermarkets where there is factory farming, where there is a lot of cruelty towards animal. That milk is very harmful. So don't do that. But I don't think in India that is the case. So if you are living in India, you can take desi milk. That's fine. तो फ्रेंड्स, दूध के बारे में काफी लोगों को शंकाएं होती हैं। तो सर ने कहा, मैं भी 4 साल तक के वेगन रहा था, और जब अब्रॉड में था, क्योंकि वहां पे जो दूध निकाला जाता है बहुत क्रुएलिटी के साथ निकाला जाता है। पर जब मैं इंडिया आया, जहाँ पे सभी लोग गाय को बहुत प्यार करते हैं, उसको इज्जत देते हैं, उसको माँ के रूप में पूजा जाता है, तो मैंने दूध पीना शुरू कर दिया। और अगर आपको कोई विश्वसनीय सोर्स से अगर आपको दूध मिलता है, जहाँ पे गाय को बहुत ही प्यार और इज्जत से, साफ सफाई से रखा जा सकता है, ऐसे जगह से आप दूध खरीद सकते हैं। कई परिवार वाले लोग अपने 1-2 गाय पालते हैं, अपने परिवार की जरूरत के बाद वो सारे दूध को कोऑपरेटिव डेयरी में बेच देते हैं। तो ऐसे लोगों से भी आप खरीद सकते हैं ऑर्गेनिक हो, पर आपके पास ये पक्की जानकारी हो कि वो अच्छे प्यार और इज्जत से उस गाय को रख रहा है। और मिल्क पाउडर ऐसे जगहों से आप खरीद सकते हैं, जैसे ये राजस्थान और गुजरात से खरीदते हैं, जहाँ पे गौशाला है, जहाँ पे रोज गाय लोगों को नहलाया जाता है, प्यार और आदर के साथ उनका दूध निकाला जाता है। तो वहां से आप भी रिसर्च करके ऐसे जगहों से मिल्क पाउडर मंगा सकते हैं। सर ने कहा है कि देसी गाय की आपको दूध ले सकते हैं, जिसे A2 मिल्क कहते हैं। A2 मिल्क वो होता है जिनके में हम्प होते हैं। हम्प मतलब थोड़ी कुबड़ रहता है गाय के, यहाँ पे अपन लोग देखते हैं ना, मुझे एक्चुअली याद नहीं आ रहा है हम्प को क्या बोलते हैं, कुबड़ टाइप का रहता है उनके में। तो जब जिन भी गाय में हम्प होता है, वो ज्यादा से ज्यादा कॉस्मिक एनर्जी लेती है और उनका दूध बहुत न्यूट्रिशियस होता है। जैसे जर्सी और दूसरे ब्रीड की जो गायें हैं, जो देसी नहीं होती हैं, वो A1 मिल्क देती हैं और वो हेल्दी नहीं होता है। आप अपना रिसर्च करके आप जानकारी ले सकते हैं। ज्यादा अच्छा हो कि आप दूध नहीं लें और उसके बदले में योगर्ट या बटर मिल्क वगैरह, छाछ वगैरह को पीजिए। और जहां से भी आप दूध से दही वगैरह जमा रहे हैं, आप ध्यान रखिए कि वो A2 मिल्क हो और जहाँ पे प्यार और इज्जत से गाय को रखा जाता हो। फैक्ट्री फार्मिंग या सुपरमार्केट जगहों से, जहाँ से अविश्वसनीय जगहों से दूध आता है, वहां से आप दूध मत लीजिए। बाकी आपकी चॉइस है, आप जैसा भी चाहें आप ले सकते हैं। So we'll take some of the common questions. I think we have discussed about everything. Again, we will still be discussing a few bits and pieces. Yes, if you have
सर मैं एक और हम लोग पॉइंट बताना भूल गए हैं कि जो भी हम ग्रुप मेडिटेशन जो नए लोग आए हैं वो ग्रुप मेडिटेशन करके आप मत सोचिए कि आपके लिए सफिशिएंट है। इंडिविजुअली मेडिटेशन हर एक को करना बहुत जरूरी है। तो रात को या सुबेरे अकेले बैठ के, ग्रुप में नहीं, अकेले बैठ के आपको मेडिटेशन थोड़ी देर 1 घंटा 2 घंटा आप जरूर करिए। हाँ सर। ले सर क्वेश्चन। And also I have heard some people saying because these days because this retreat, if you want to follow 21 days, it's a full on from morning till night. You have a lot of things to do, and it's a very full dedicated practice. But some people, they say they want to attend many sessions, so they don't practice meditation, but they like to keep on listening to Zoom sessions. Theoretically, they listen one session in the morning, another session in the afternoon, and the other session in the night, but they don't meditate, they don't implement their practices, they don't experiment. So those kind of people, if you are keeping on just listening and accumulating the theoretical knowledge, you will get confused, and there is a greater possibility you will get confused. So just stick on to one practice at a time, right? So that is very important. You practice something, you complete that experiment, and then go to the next practice. Don't follow multiple things in the same time. Don't follow what somebody else is saying, what other people are saying. Don't integrate everything at a time, then you get confused. So truth is very simple. So take small portion, experiment it, then integrate it, then take another portion. Don't take too much. You will get stomachache. You get confusion. सर कह रहे हैं कि बहुत लोग ये सोच रहे हैं कि हम एक जूम के से एक मास्टर से सुनने के बाद दूसरे मास्टर को सुनते रहें और मेडिटेशन नहीं करें और हमारी हीलिंग हो जाए, हमारा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए। तो ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको सुनना कम है, आपको इम्प्लीमेंट ज्यादा करना है। तो आप बहुत ज्यादा चीजों को जब सुनेंगे तो आपका माइंड कंफ्यूज हो जाएगा। उससे बेहतर है कि आप एक चीज में जुड़े रहिए, उस चीज को आप इम्प्लीमेंट करिए, उसको एक्सपेरिमेंट करिए। जब आप उसको इंटीग्रेट कर लें, फिर दूसरे स्टेप में जाइए, दूसरी चीज को फॉलो करिए। पर एक साथ बहुत ज्यादा सुनना और एक साथ बहुत चीजें इम्प्लीमेंट करने से आपको पेट दर्द हो सकता है। So I once again repeat, what are the things we will be doing in this retreat is meditation, like 1 hour minimum meditation we do as a group, 1 hour to 1.5 hours. But other than that, you have to do individually on your own. There should be no dependency. Group meditation is good, but you should also have a practice of doing your own meditation. So anytime you can meditate on your own before going to sleep or the first thing in the morning, anytime. 1 hour meditation every day you have to do. That is the first step. The second step is you have to practice mindfulness. Mindfulness means whatever you are doing, you are focusing only on that. No multitasking. When you are cooking, your 100% focus is only on cooking. When you are eating, your 100% focus is only on eating. Any work you do, 100% you are focused on that. That is mindfulness. It comes with practice. So you start with small things. Like when you're taking shower, be mindful, right? When you are eating, be mindful. And when you're cutting vegetables, be mindful. So small things you practice and you can integrate more and more in your life. So the second point is mindfulness. First is group meditation and individual meditation. The second is mindfulness. The third is reading books. You have to read a lot of spiritual books. Only when you read spiritual books, you become a master. When you're reading a spiritual book, a very good book, then you are connecting to the energy of that master. You're also, the books motivate to help you to be a better person. The books motivate you to be a yogi. So there are many amazing books, beautiful books recommended by PSSM, right? So you can read all the books about the soul evolution, the soul journey, and you can read great autobiographies. You know, there are many autobiographies of many yogis. India is a land of so many gurus. So you can read autobiography of a yogi, living with the Himalayan masters, autobiography of Annie Besant, Leadbeater. So you can read amazing, beautiful books, which will give you a lot of inspiration. So the third point is reading books. So the first is meditation. The second is mindfulness. The third is reading books. And the fourth is exercise. You have to do exercise every single day. Any kind of exercise, minimum half an hour. You can go for a walk in the nature, you can do jogging, or you can do yoga, you can do pranayam,
Anything you can do, cycling, any kind of exercise, half an hour, right? So that is also very, very important. And the last point is, because we are doing it as an experiment, the whole retreat we are doing as an experiment. So I want you to monitor your own progress. So before going to bed, you write down what experiments you have done, what practices you have followed, and what is the outcome of it, how you are feeling on that particular day. You are feeling more calm. Is it better than the yesterday? You are having more emotions. Is your emotions coming up? You are feeling angry, frustrated? No judgments. All the emotions, before it releases, it comes up to the surface and then release. So you write down all those things and maintain a journal. You have to monitor your own progress. You have to be a witness of your own progress. So write down the journal. Okay. And anyway, the detox diet is there. So that is the sixth point, the detox diet. So we follow the detox diet. For the first week, except for Buddha Purnima, the Buddha Purnima will be on juices. But rest of the days, it's your choice. You want to be on the fruits, because some people, they got used to the fruits. They can enjoy it. It's your choice. Some people, they like 1 meal a day because you experimented in the previous retreat. You continue the 1 meal a day. Or some people are saying, no, I want to enjoy food. So then take 2 meals a day. So this is the first week. That's all your choice. Your first week is your choice. But second week, we are going to follow raw food diet. So the raw food diet, you can eat anything, nuts, dry fruits, juices, salads, vegetables, but without cooking. It should be raw. That's the second week. Third week is completely juices. So I'll tell you how to do with the juices when it comes to the third week. And the most important aspect of detox is water. And some people say, no, I cannot drink so many liters of water. It's too difficult for me. There is a simple technique. I'll tell you, you follow this technique, it will be easy. You first fill the bottles of water first thing in the morning. If possible, use copper bottle. 5 liters. Fill it in the bottles. And when you get up, the first thing when you get up, you drink 1 liter of water. That is a very, very healthy habit. The first thing you get up at 4 o'clock, 5 o'clock, 6 o'clock, doesn't matter. As soon as you get up, you drink immediately. The first thing before you get out of the bed. Before you get out of the bed, drink 1 liter water. That's the very, very important step to begin with the day. You will see the changes. You will see your skin starts glowing. You will see all your toxins are coming out and you will feel so light. And it's not like you drink 1 liter in the morning and then you don't drink anything in between and drink 1 liter in the afternoon. No, it's not like that. Every day 1 liter in the morning, and then every 1 hour or every 2 hours you drink half a liter water, 400 ml to 500 ml. So some people, they have the habit of just sipping the water. When they drink, they just sip one sip. No, you drink 400 ml, minimum 400 ml you drink in one go. So every 2 hours you drink 400 ml, and morning 1 liter. So by the end of the day, naturally you will feel so detoxified. You'll feel so happy. And yes, you might need to go to loo frequently and your bladder feels full, but that's just 1 or 2 days you will feel. And you might feel diarrhea, you might feel loose motion, you might feel vomiting, you might feel headache. All these are cleansing process, so which is a good thing. If these things are happening, feel good or detoxifying. So the sixth aspect is the detox. So I told you, water is compulsory. Okay. You practice this simple technique of water first thing in the morning of 1 liter, and every subsequent hour, every once in 2 hours, every alternate hour, drink 400 ml minimum. So you will end up drinking 5 to 6 liters water. When you drink this much water, you will not feel hungry. And when you're drinking this much water, you will enjoy the detox. You will enjoy the fruits, you will enjoy the nuts, you will enjoy the juices. Okay, friends. So please note down, and this is very important. Please take a pen, paper, note down all those things and don't forget it. Sir, I will send in the group, sir, also. I will send in Hindi and English, both language, I will send. But there are people who are not in the group also. Some people are watching in the YouTube. So for those people, it's better you note down. तो बताना है सर थोड़ा सा? Yes, madam, go ahead.
तो उन्होंने कहा है जो 6 पॉइंट्स हैं आप बिल्कुल लिख के रख लीजिए। आपको मेडिटेशन जरूर करना है, एक जो हम सब लोग ग्रुप मेडिटेशन करेंगे, उसके अलावा सभी लोगों को अपना अपना इंडिविजुअल मेडिटेशन सुबह, रात, दोपहर जब भी आपको टाइम मिले वो जरूर करना है। दूसरा आपका माइंडफुलनेस, छोटे छोटे कृत्यों से आप माइंडफुल होने लग जाओ, धीरे धीरे अपनी उस चीजों को आपको प्रैक्टिस करते करते आप परफेक्ट होते जाएंगे। जहां बॉडी है, जो काम कर रहे हैं वहीं पे आपका मन रहना चाहिए, प्रेजेंट मोमेंट पे, उस काम पे फोकस करते हुए। तीसरा, आपको रीडिंग बुक्स पढ़नी है। जब आप कोई भी बुक, स्पिरिचुअल बुक पढ़ते हैं तो उस मास्टर की एनर्जी के साथ आप कनेक्ट हो जाते हैं और आप पहले से बेहतर होते जाते हैं, आप एक योगी बनते जाते हैं। बहुत सारी बुक्स हैं, जर्नी ऑफ द सोल्स और जर्नी ऑफ ए सोल और सोल्स जर्नी, सोल प्लान, सब कुछ है। और ऑटोबायोग्राफी इंडिया में बहुत सारी है, योगी की आत्मकथा वगैरह वगैरह सभी आप ढूंढ के आप पढ़ सकते हैं। चौथा पॉइंट उन्होंने कहा है कि एक्सरसाइज कम से कम आधा घंटा रोज अपने शरीर पे, गतिविधियों पे काम करना है, चाहे वो वॉकिंग हो, चाहे योगा हो, चाहे जॉगिंग हो, चाहे साइकिलिंग हो, आधा घंटा आपको श्रम एक्सरसाइज द्वारा करना ही है। पांचवा पॉइंट आपको जैसे पहले भी बताया कि आप एक डायरी मेंटेन करिए। आपने उस दिन कौन से इमोशन को महसूस किया, चाहे गुस्से की, चाहे हेट्रेड की, चाहे कोई भी, कौन सा आपने उस इमोशन को देखा और समझा। और दूसरा, जो आपने माइंडफुल किए, वहां कहाँ कहाँ पे चूके, कहाँ कहाँ पे सक्सेस आपने पाई, ये सभी कुछ, और मेडिटेशन के अनुभव, ये सभी आपको रोज रात को जर्नल्स में लिखने हैं। ये पांचवा पॉइंट था। छठवां पॉइंट था डाइट आपको फॉलो करना है। जैसे पहले हफ्ते 1 या 2 मील आपके ऊपर डिपेंड करता है, दूसरा हफ्ता पूरा कच्चा रॉ फूड, तीसरा हफ्ता टोटली लिक्विड। ये डाइट डिटॉक्सिफिकेशन के लिए है और आप इससे बहुत ही हेल्दी हो पाएंगे। आपको इसके अलावा 5 लीटर रोज पानी कम से कम पीना है। आप सबसे अच्छा है कि कॉपर की 5 बॉटल आप भर के रख लीजिए। अगर कॉपर की नहीं है तो आप कोई भी बॉटल्स में 5 लीटर आप सवेरे रात को आप भर के रख लीजिए। सवेरे उठते साथ ही बिस्तर छोड़ने के पहले ही आपको 1 लीटर तुरंत पानी पीना है। ये बहुत अच्छी हैबिट है, इससे आपके डाइजेशन की और इम्यूनिटी में आपको ताकत मिलेगी। और उसके बाद सुबह जब आप ये पानी पी लें तो उसके बाद बहुत लंबा गैप न डालें, हर 1 घंटे में आप कम से कम आधा लीटर पानी पीने की हैबिट डालें। सिप सिप करके पानी नहीं पीना है, एक बार में आपको कम से कम 400 ml पानी पीना है। आप उससे ज्यादा भी पी सकते हैं, इससे ज्यादा फ्लश होगा आपके टॉक्सिन का और आपके फ्लश आउट होंगे सारे टॉक्सिन। और हर 2 घंटे में आप ध्यान रखिए कि आपकी 1 बॉटल खत्म हो जाए। डिटॉक्सिफिकेशन के द्वारा आपको बहुत अच्छा लगेगा। हो सकता है आपको डायरिया भी हो, क्योंकि काफी आप पानी पी रहे हैं, तो जो भी आपका स्टूल अंदर में जमा है वो बाहर फ्लश होगा, तो आपको डायरिया भी हो सकता है। तो आप घबराएं मत, बार बार आपको यूरिन के लिए भी जाना पड़ेगा, ये थोड़ा अनकन्वीनियंट जरूर रहेगा, पर ये आपके बेहतर, आपकी हेल्थ के लिए है। तो इसको आप प्रैक्टिस करते रहिए और अपने आप के जीवन शैली में पानी को बिल्कुल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रूप से शामिल कर लीजिए। इससे आपका सिर्फ डिटॉक्सिफिकेशन ही नहीं होगा, आपकी स्किन भी ग्लो करेगी और सबसे अच्छी चीज, हमको भूख कम लगेगी। जब भी हमें भूख लगती है तो हमें पता नहीं चलता है कि वो पानी पीने से भी चली जा सकती थी, पर हम उसके बजाय खाना खा लेते हैं, वही हमारे बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाता है। तो आपको पानी पीने से आपकी हेल्थ भी अच्छी होगी, स्किन भी अच्छी होगी, भूख भी कम लगेगी, और उसके बाद जब आप जो भी खाना खाएंगे या फल खाएंगे तो ज्यादा इंजॉय करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, ये सभी चीजें आपको बिल्कुल ध्यान से फॉलो करनी है। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आप निराश मत होइए, ये मत सोचिएगा कि मैं इस रिट्रीट के लिए क्वालिफाइड नहीं हूं। ये आपके ऊपर सर ने छोड़ दिया है, सर का सिर्फ एक गाइडेंस है कि आप ऐसा फॉलो करिए। जिन्होंने भी पिछला रिट्रीट हमने जैसे फॉलो किया, तो फ्रेंड्स मैं तो कहूंगी बिल्कुल एक तरीके से एक्सपेरिमेंट करिए अपनी लाइफ में। 21 डेज में जितना मैं एनर्जी फील कर रही हूँ, जितना लाइट महसूस कर रही हूँ, मेरा वेट रिड्यूस हो गया और ज्यादा एंजॉय कर रही हूँ अपने फूड को और हर चीज को। तो आप लोग भी जो अगर नए जुड़े हैं तो इसको जरूर से एक्सपेरिमेंट के रूप में शामिल करिए। 21 डेज का एक्सपेरिमेंट है, बहुत लंबा नहीं है, आप इतना तो अपने लिए कर ही सकते हैं। And anyway, it's a lockdown, you cannot travel. And so this is the best time to become a yogi. Yes. बिल्कुल, कहीं नहीं जा पा रहे हैं तो घर बैठे बैठे आप योगी बनिए।
Okay, so, and also one more important point, our houses should be our ashram. So you should clean your house every day. Cleaning means not just removing the dust and keeping the things. Cleaning means you throw away the things which you don't use. Okay, so the more you clean outside, the more your inner also gets clean. The more your inner gets clean, the more your outer gets clean. So it is a reflection. So keep the things which are very necessary. Don't keep unnecessary things in the house. Your house should have a lot of empty space, and that's when the chi energy, the pranic energy moves around. If you have too many furnitures, too many things which you are not using, then that takes up the energy. So focus on, in these 21 days, focus on cleaning your house bit by bit. Make your house an ashram. Your house should be ashram. Enjoy your place, wherever you are living, in a small house, big house, a bungalow, doesn't matter. Whatever the house you are living in, it should be clean. So that is the definition of an ashram. An ashram is a place where it's full of energy. So the more you do meditation in your house, the more you start cleaning your house, the more your house becomes an ashram. And of course, no violence food in the house. Okay, so for the people who are new to meditation and you are eating meat and other things, just for this 21 days you do this experiment. Don't cook any meat, don't eat any meat, only for 21 days. Even if your loved ones are there, they are still eating meat, you can just convince them, you speak them with love, that just for 21 days give me the opportunity. In that 21 days there will be a great change, and they only come to know. So every house should be an ashram, no violence, no killing, and it should be full of energy and full of meditation energy, because you are doing meditation sitting in the house. तो फ्रेंड्स, सर ने बहुत अच्छी बात बताया कि इस 21 दिन में आपको अपने घर की भी सफाई करनी है। घर की सफाई का मतलब सिर्फ हमें झाड़ू पोछे से ही नहीं करना है, आपके घर में जो भी बिना यूज किए हुए चीजें रखी हुई हैं उनको भी साफ करना है। हम बेवजह बहुत सी चीजों का संग्रह कर करके रखते हैं जिससे हमारा घर भरा रहता है, और वो सब जो अनयूज चीजें हो रही हैं वो नेगेटिव एनर्जी होकर हमारी प्राणा एनर्जी, हमारे घर की एनर्जी को सक करती हैं। तो अपने घर को आश्रम बनाइए, जो जरूरत की चीजें हैं उसको रखिए, जो चीजें नहीं है उनको धीरे धीरे करके अपने घर से बाहर निकालिए। जितना आपका बाहर का पूरा वातावरण घर का ऐसी चीजों से खाली होता जाएगा, वैसे ही आपका मन भी उतना ही खाली होता जाएगा, साफ होते जाएगा। और जैसे आपका मन खाली होते जाएगा, आपकी बाहर की दुनिया भी उतनी सुंदर बनते जाएगी। तो आपका घर आपके हाथों में है कि उसे आश्रम बनाए कि नहीं, क्योंकि जितनी वहां पे प्राण शक्ति होगी उतना ही वो आश्रम कहलाने के योग्य होगा। तो आप चूंकि मेडिटेशन कर रही हैं तो अपने घर की प्राणा एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी को भी बढ़ाने की जिम्मेदारी आपकी है। तो आप ज्यादा से ज्यादा वहां पे मेडिटेशन करिए, क्लटर्स चीजों को आप बाहर फेंक दीजिए, और हो सके जो नॉनवेज खा रहा है वो एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे 21 दिन न वो खाए न पकाए। अपने घर वालों को, आप प्रियजनों को आप समझा दीजिए कि मैं 21 दिन के लिए एक एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ, तो 21 दिन तक के मुझे यहाँ पर कोई भी हिंसा से पकी हुई, मतलब हिंसा से लाई हुई चीज नहीं पकाना है। तो न पकाना है न खिलाना है, और 21 दिन अपने आप को और उन लोगों से माफी मांग के आप वेजिटेरियन को ही फॉलो करिए कुकिंग में, मेडिटेशन ज्यादा करिए और अपने घर को आश्रम बनाइए। Okay, so to be vegetarian is to be human. Unless you are into ahimsa, you are not a human. We are all animals, but a person who is having compassion, then we become human. So from an animal, we have to become human. From a human, then we become yogi. So this is a necessary step. Okay, and yes, you can. The most important thing, especially for women, is to clean the kitchen and their cupboards. They will have hundreds and hundreds of clothes which they never used in the past 2-3 years. So this is a great exercise. If you have not used any cloth for the last 3 months, that means that you don't need in your life. So have a policy, start cleaning your clothes, start give away to the people who don't have. Then you have more good karma, and also you will notice that
you will get new things in your life. Let the old go, then the new will come. Create space in your heart to give away the unwanted things. Clean your cupboards. If you are not used any cloth for the last 3 months, used any utensils for the last 3 months, that means you don't need that attention. So I'm just giving an approximate 3 months. You can make it 4 months or you can make it 5 months. That is your choice. But use the spiritual sense to really take off the old, because unless you clear your cupboards, unless you clear your house, the house cannot have positive energy. And see, it is very important. We are meditating and our family members, our friends, everybody should be happy in that space. So we take the first step. Okay. Experiment it, you will know you will see the difference. But when you are throwing away, you will feel a lot of attachment. Your heart will feel pain, but let go, because you don't need it. Somebody needs it. Let go. Do this experiment. You will feel there is a big burden from your shoulders removed. You will feel light, less maintenance, and your life becomes simple, happy. Try this experiment. तो फ्रेंड्स, उन्होंने कहा है कि प्राणियों में और हम इंसानों में एक ही फर्क है कि अगर हम वेजिटेरियन नहीं खाएंगे तो हम भी वैसे ही प्राणी रहेंगे। हमको पहले वेजिटेरियन बनके इंसान बनना है, ह्यूमन बनना है, उसके बाद ही हम योगी बनेंगे। और उन्होंने कहा है कि किचन को और कबर्ड को, आपके जो भी घर के हैं, उन सभी को साफ करिए। अगर आप 3-4 महीने से कोई कपड़े को यूज नहीं कर रही हैं तो प्लीज उसको बाहर किसी नीडी पर्सन को दीजिए। इससे आपका गुड कर्मा भी बनेगा। और जब आप पुरानी चीजों को बाहर करते हैं तो नई चीजों को आप अट्रैक्ट करते हैं। अगर बर्तन भी आप यूज नहीं कर रही हैं तो वो भी किसी को आप दे दीजिए। ये स्पिरिचुअल सेंस को यूज करिए। अगर आप उसमें पुराने सामान जिसको यूज नहीं कर रहे हैं, चाहे वो किचन का कबर्ड हो, चाहे आपके बेडरूम का कबर्ड हो, उसमें पॉजिटिव एनर्जी नहीं रहेगी जब उसमें क्लटर्स, कचरे जमा रहेंगे। तो पहली स्टेप है आपको खुश होने का। आप अपनी चीजों से जो भी आपके संग्रह करके रखे हैं उनसे अटैचमेंट छोड़िए, उन्हें लेट गो करिए। एक अनुभव के, एक प्रयोग के तौर पर इसको करके देखिए। अपने कंधों से बोझ हटाइए। आपको मेंटेनेंस भी कम करना पड़ेगा और आपका किचन और आपका कबर्ड पॉजिटिव एनर्जी से भर जाएगा। थैंक यू सर। So for the people who have really sincere, they will become yogi only. If you practice all those things, naturally you will become yogi. Naturally, everybody will be an enlightened person. So just do step by step. Just do it as an experiment, because it is your free will and you can do it. Faith is important. You should trust in the process. Trust the process and do it as an experiment. उन्होंने कहा है जब अगर आप गंभीर मतलब सिंसियर रहेंगे तभी आप योगी बन पाएंगे। आपको धीरे धीरे एक एक कदम बढ़ाने हैं और इस जो भी मैं कह रहा हूँ उस सभी चीजों पे आपको विश्वास रखना चाहिए, तभी आप आगे उन्नति कर सकते हैं। ट्रस्ट द प्रोसेस। ओके सर, थैंक यू। Okay, friends. So I think क्वेश्चंस के लिए करें। सर मैं एक चीज दिखाना चाहती हूँ, दिखा सकती हूँ सर? Yes, madam. Go ahead. एक मेरी फ्रेंड ने भेजा है अपना जो आपका रिट्रीट से उनका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, तो उसने बहुत ही प्यारा सुंदर सा एक पेंटिंग बना के भेजा है और मुझे बहुत इंसिस्ट कर रही हैं कि आपको मैं वो दिखाऊं ताकि वो देखें आप सभी लोग कि वो किस तरीके से ट्रांसफॉर्म हुई है एक ककून से एक बटरफ्लाई के रूप में। कविता देशपांडे है पूना से हमारी फ्रेंड। दिख रहा है सर? Yes, madam, I can see. ये उन्होंने बनाया है फ्रॉम कंफ्यूजन टू कंक्लूजन। Yes, mindfulness on one wing and meditation on the other wing. That's the way to be an angel. सर आपने कहा था ना माइंडफुलनेस और मेडिटेशन दो विंग्स हैं हमारे, तो उन्होंने ये बनाया है। Yes, an experiment. Yes. So from conclusion to conclusion. Wow, very good. Very good, Kavita. Very good. Yes. Thank you. Very good. Beautiful expression. Beautiful expression of the transformation throughout.
Nice, madam. Nice, Kavita ji. थैंक यू सर. हाँ सर, आप क्वेश्चन ले लो. Madam, there are some questions regarding meditation. Somebody was asking in the chat group that if you also, yes, something important I want to share is you don't need to sit troubling your body. You can take the support of the wall. You can take the support of the chair, the back. So make yourself really comfortable. That is very important. And you should not remove the finger lock. Don't remove the finger lock. If you're feeling itchy, you can do like this, but don't remove the finger lock. But if your legs are feeling numb, you can stretch your legs and then get back into the lock posture. So if you are feeling uncomfortable in the body, just stretch a bit and come back into meditation. But as long as you're not opening the eyes, as long as you're not removing the finger lock, the energy is intact. Okay. And also some of the other questions I get is, yes, can we eat sprouts? Yes, you can eat all sprouts. Somebody is asking, is it walking or yoga? Everything is your choice. But if possible, if you have a nature, like or the rooftop, terrace, spend time in the open air, right? Spend time in the open air. People who have open terrace or gardens, do your exercise, do your stretching in the open air. So that is very important. Be connected to the nature. That's very, very important. And grounding is also very important. When you're doing too much intense meditations, you might feel a little off, dizzy, or your body is not feeling comfortable. That's why we drink immediately water after meditation. After intense meditation, drink immediately a lot of water and then walk barefoot. Walk barefoot on the soil, on the grass, on the rocks. Connect with the Mother Earth. And also take shower immediately after intense meditation. Take shower. That also balances your emotions. And also one more important point, everybody has to experiment this. When you are coming for the group meditation before 3:30, take shower and then come. Your aura is very clean. You will notice deep meditation. Before doing meditation, take a quick shower or long shower is your choice. The longer the shower, the better. But take shower and sit for meditation. You will enjoy the meditation. And anytime you are going through any emotional trauma, or you're having an argument or a fight or frustration, you are going through a lot of fear, anxiety, any kind of emotion, immediately go to the bathroom, take a shower. You feel the emotions are coming back to the balance. Do this experiment. And yogis take a long shower. They know how to enjoy life. Of course, yogis, the Himalayan yogis, they take shower in the rivers, the nature streams. We can take shower in our own water shower. Right? So And people are experiment. asking for your video of physical retreat. Okay, I will also. First, let me give away all the instructions, then I will show. Yeah, I will show. Sure. हाँ मैडम, you can translate. तो सर ने कहा है कि जो मेडिटेशन से डाउट थे उनके कि आपको अपने पीठ को बिल्कुल तनाव नहीं देना है. आप वॉल की या चेयर पे पीछे अपने पीठ को टेक के भी आप बैठ सकते हैं. बस आपको ये करना है कि अपने फिंगर्स जो लॉक करके रखे हैं उनको नहीं खोलना है. और अगर आपके पैर में कुछ नमनेस, कुछ सुन्नपना आ जाता है, बहुत सुन्न हो जाते हैं, तब आप पैर को थोड़ा सा खोल के आप स्ट्रेच कर लीजिए. फिर पैरों को भी क्रॉस करके बैठ जाइए और आंखें आपको नहीं खोलनी है पूरे मेडिटेशन के दौरान. तो ये आपके लिए टिप दिए हैं. उन्होंने कहा कि आप स्प्राउट्स वगैरह खा सकते हैं और एक्सरसाइज आप बेहतर हो कि आप ओपन एयर में, चाहे जहाँ पे नेचर हो वहां पर जाके आप करिए. अगर वहां नहीं कर पा रहे हैं तो अपने टेरेस में जाके खुले में आप स्ट्रेचिंग, वॉकिंग जो भी करना चाहते हैं कर लीजिए. ग्राउंडिंग करना आपके लिए बहुत जरूरी है. मेडिटेशन के तुरंत बाद आपको हम पानी पीने के लिए कहते हैं क्योंकि इससे ग्राउंडिंग होती है. और आप बेयरफुट वॉक, मतलब नंगे पैर आप चलिए जहाँ पे आप पृथ्वी से, माँ पृथ्वी से आप जुड़ सके, चाहे वो घास हो, चाहे वो मिट्टी हो, चाहे वो पत्थर हो, आप बस चलिए ताकि आप पृथ्वी के कांटेक्ट में आए. इससे आपकी ग्राउंडिंग होएगी. और नहाने के लिए उन्होंने कहा है कि आप इस सेशन को आने के पहले अगर आप नहा के आएंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होता है. छोटा ही शावर लेके आइए, वो जरूर आइए उसको करने के पहले. और
जब हम इंटेंस मेडिटेशन में बैठते हैं और अगर आपके इमोशंस आपके सरफेस पे आ रहे हैं तो इंटेंस मेडिटेशन के बाद भी आप जरूर नहाइए ताकि आपके इमोशंस बैलेंस हो सके। आपके दिनचर्या में कभी भी बहुत गुस्सा या फ्रस्ट्रेशन या जेलसी या कुछ लड़ाई वगैरह हो जा रही हो तो आपके लिए एक सुझाव है कि आप तुरंत बाथरूम में जाके नहा लीजिए, आपके इमोशंस बैलेंस हो जाएंगे। योगी लोग बहुत लंबे लंबे समय तक के नहाते थे, आप भी अपने बाथरूम में नहा सकते हैं। नहाना हमारे ऑरा को क्लीन करता है और हमारी हीलिंग में, हमारे बैलेंसिंग में मदद करता है। Yes, in this, for the next 21 days, you are going to take shower minimum 2 times per day. So you please make it as a routine. 2 बार आपको जरूर नहाना है। जैसे हम सवेरे उठ के नहाते हैं तभी, और मेरे ख्याल से जब हम सेशन के पहले नहा के आए तो वो और ज्यादा अच्छा होगा। और यदि कोई नहीं नहा पा रहा है उसके पहले तो आप रात को जब भी आपको मिले टाइम तो 2 बार आप अपनी ऑरा को क्लीनिंग के लिए आप जरूर नहाइए। Okay, so now the video I will show tomorrow morning, the first thing I'll show, but today I have to finish the session soon, so we'll take some questions if you have any. So, and then we'll finish it. And if you have any questions regarding meditation, so Neetaji will answer. Okay. So yes, somebody was asking, can we lie down and meditate? No. When lying down means your body cells have memory. You know, every day you lie down to sleep. So when you lie down, your body memory tells you it's time to sleep. So you cannot lie down and meditate unless you have a medical condition. So no lying down and meditating. But you can sit in a comfortable posture. You can lean back and meditate. No lying down. Unless you have a medical condition, you cannot sit. Then yes, you lie down, cross the feet, and then you meditate. Okay, and is it necessary to cover the eyes with some cloth? Not necessary, but if you feel comfortable, you do so, but it's not necessary. And some people say, I have a knee pain, so don't sit on the floor, sit on the chair, sit on the sofa, make yourself really comfortable. And is it the same link every day? Yes, it's the same Zoom link every day. And some people say, my body feels painful during meditation. Yes, it is all the karmic cleansing process. It is a self-healing process. Every beginner of meditation goes through a lot of pain. You are not alone. So don't worry about it. Do more meditation. And yes, madam, you please translate this and then we'll take a few questions. इन्होंने कहा है कि हम क्या लेट कर मेडिटेशन कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं। आपके पूरे शरीर की सेल्स में एक मेमोरी होती है, क्योंकि जब भी आप लेटते हैं उस सेल्स को एक ही रिमाइंड होती है कि मुझे अब सो जाना है। तो आप अगर लेट के मेडिटेशन करेंगे तो तुरंत नींद में चले जाएंगे और आप फायदा नहीं उठा पाएंगे। तो आप बैठ के ही ध्यान करिए। सिर्फ उनको ही लेटना अलाउड है जिनके पास कोई मेडिकल कंडीशन है, जैसे कोई बीमार व्यक्ति है या बहुत ही बुजुर्ग है जो नहीं बैठ पाता है, उसको हम कहते हैं कि वो लेट के करे, पैरों को क्रॉस करके, अपने हाथों को क्रॉस करके। पर अगर आप स्वस्थ हैं तो आप बैठ के ही करिए। आंखों के ऊपर कोई भी कपड़े ढांकने का कोई जरूरत नहीं है, पर आपकी चॉइस है। अगर आप कुछ आई कैप वगैरह लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। और शरीर में दर्द होना स्वाभाविक है, क्योंकि कॉस्मिक एनर्जी के द्वारा हमारी हीलिंग, हमारी क्लींजिंग शुरू हो जाती है। तो आप बिल्कुल भी मत घबराइए, ज्यादा से ज्यादा आप मेडिटेशन करते जाइए। Okay, so we will unmute, and also in the meanwhile, because we have titled this as Dhyan Bharat. So previously it was Dhyan Chhattisgarh, but then later on we saw people coming from various other states. So in your chat box, it will be good if you just type where are you from, your location, just your state. Just type your state, so we'll see how many states are participating. Yes. आप लोग अपने जिस भी राज्य से हैं, स्टेट से हैं, उस राज्य का ही सिर्फ नाम लिख दिए। सर जानना चाहते हैं कि आप कौन से राज्य से हैं, क्योंकि अब हमने ध्यान भारत कर दिया है ध्यान छत्तीसगढ़ के बदले। तो हमें मालूम चलना चाहिए कौन कौन से राज्यों के लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वाओ वाओ। So we will take questions, but in the meanwhile you can put in the chat box. You can put your name. Or you can put your district, or you can put your state. Just say where you are from. That's all in the chat box. So now we will unmute few people. Yes, Shalini.
We'll unmute and we'll take some questions. Hello, sir. Thank you for doing this session for us. My question is, when I go deep in meditation, my body falls forward and I lose my continuity. So that's fine. That's fine? absolutely fine. Yes, you have to be as natural as possible. In meditation, if your body is falling forward, let it fall forward. If your body is going backwards, let it go backwards. So don't worry about the body. Always focus on your breath. But if you're not feeling comfortable, then you come back to the normal and then be with the breath. But in meditation, whatever the direction the body is going, let it go. You just allow the nature. Body should be as natural as possible. So you don't make an effort to come back. So let the body go in its own comfort. Okay. Oh, so I should not come back up. Not necessary, unless you feel uncomfortable. If you feel uncomfortable, you feel pain, you want to come back, you come back. But if you're comfortable going back and forward, swinging, just let the body do whatever it wants. Cleansing, the body will move in different directions for some people, but then after that, it will come back to the normal position. Okay, sir. So you don't need to worry about any of the body movements. Let the body movement be natural also. Okay. And my other question was, how is any guidelines to increase the duration of meditation? Like my threshold now is 1.5 hours. If I want to do for 4 hours, do I just straight go for 4 hours or gradually increase? Everything is your choice. Okay, sir. Okay, everything thank you. is your choice. Go step by step because you should enjoy the process. See, meditation is not something you force yourself. Meditation is something you enjoy. So you're already doing 90 minutes. So increase half an hour, 2 hours, 2.5 hours, 3 hours. Keep increasing half an hour. So the technique is don't open the eyes. So sometimes how I feel, how I practiced in my olden days is I will select a music track which is of 2 hours. So until the music finishes, I will not open my eyes. So I know I've done 2 hours. Okay. Or, if you want to do 3 hours, select a 3 hours track. So in that way, you are not disturbed. Sometimes some people keep alarm. Then the alarm rings, they get disturbed. So you should not get disturbed in meditation. So choose the tracks according to the time so that you can enjoy the meditation. Okay, sir. Thank you. Okay. Where are you from, madam? Seattle, US. Seattle. Okay. All right. Thank you. So next, Aarti. Aarti is asking always questions, so we'll take other people. Anil. सर मैं सारे आंसर एक साथ आखिरी में ट्रांसलेट कर दूंगी, मैं लिखते जा रही हूँ. Yes. टाइम हो रहा है तो. Yes. हाँ अनिल जी. नमस्ते प्रदीप जी. नमस्ते सर. आप कहाँ से सर? विशाखापट्टनम. विशाखापट्टनम. हाँ सर, बोलिए सर. Is there a prescription of meditation for work-life balance? What we are doing is work-life balance only, sir. When you follow mindfulness, when you do meditation and practice mindfulness, it's a work-life balance naturally. I'm talking about you experiment. This is the prescription. This is the prescription. You just practice mindfulness. You practice mindfulness, you become more efficient in whatever the work you do. And you will be happy. You won't lose energy. You are working the whole day. You will be still active, fresh when you practice mindfulness. Any work you do, you practice mindfulness. And when you are not doing any work, practice meditation. This is the perfect prescription. And have a healthy diet. Have a healthy diet. Have a healthy diet. Do exercise. Read books. Meditate. Mindfulness. This is the perfect prescription for a golden middle path. Work-life balance, to enjoy life. Okay. So next, Preeti. Good evening, sir. Am I audible? Yes, madam. Go ahead. Sir, I am from Agra. Basically, my problem is that I am having very negative thoughts. Many negative thoughts come into my mind and I get scared of these thoughts. Thoughts like I'll be dead very soon. I see my dead body coming. I see my children are crying. So these type of thoughts.
Are you a vegetarian, madam? Yes, sir, I am Jain. Okay, so you eat garlic? You don't eat garlic, right? Yeah, I eat garlic, sir. Yeah, if you eat garlic, then you will have more fear consciousness. So stop eating garlic. Okay, so you can experiment. You should immediately stop eating garlic. The more you eat garlic, the more it creates fear consciousness. You can eat everything in the vegetarian kingdom except garlic. You can eat onions, you can eat anything you want except garlic, because garlic creates a lot of fear consciousness. You do experiment. You stop eating garlic, and then you see in this 21 days, and after 21 days you eat garlic, you will notice the difference. So this is how you do the experiment. So stop eating garlic and participate in group meditation. Make friendship with positive people. Okay, when you mix with positive people, then negative thoughts won't come. So make friendship with positive people, and don't let any negative energies, any negative thinking people come near you. You remain positive, do more meditation, join group meditations. So, and make friendship with positive people. This is how you overcome it. And sir, the more I think, no, that today I'm not going to think You about just you forget more about thoughts come. you forget about it, madam. I know negative thoughts before meditation. Everybody will have negative thoughts only. Okay, so it's not only your problem; it's many people's problem. So you first do this experiment. Stop eating garlic. Do everyday meditation, and always be with positive people. Do this experiment, and then you ask the next question. Okay, first you practice Thank you so it. much, It's sir. important you practice. Thank you. Thank you. So next, Priyanka. नमस्कार सर. नमस्कार सर. Yes, madam. सर मैं दिल्ली से. You are सर from मैं Delhi. जी सर. मैं So you said मैं Delhi. जी मैं मैं Delhi दिल्ली means से. you are Delhi. Okay, Delhi से हाँ. मैं ये आपसे पूछना चाह रही थी कि क्या जीरो माइंड स्टेट में लंबे समय तक रहा जा सकता है मेडिटेशन में? Everything is possible, madam. लाइक मतलब मैं 1 घंटे अगर मेडिटेशन में बैठती हूँ तो आधे घंटे में जीरो माइंड स्टेट में रहती हूँ. It depends on your sincerity. It depends on your sincerity and seriousness. It depends on your practice. But don't focus on the zero state mind. Okay. Meditation is something which happens naturally. When you do the right things, meditation will happen naturally. So you should not have any expectations in meditation. If you're having any expectations, you will never get to zero mind state. So this is very, very important. No expectations whatsoever. That's why when I spoke about the meditation, the second step in meditation is to be with the breath and no expectations. Okay, you drop all the expectations and just be with your breath. You experiment it for this 21 days. Within this 21 days, you will experience the zero thought state. Without expectations, you just do the practice. It will come to you naturally. Some people take longer time, some people take shorter time. It doesn't matter. But are you doing the right thing? That matters. So everything is possible, but don't have any expectations. Do the right thing. जी सर. और आज का मैं एक्सपीरियंस बताना चाह रही थी. आज No, we will take only the questions. काफी questions. थैंक यू सर. Okay, thank you. Right, Archana. नमस्ते सर. Yes, madam. मेरा क्वेश्चन सोल प्लान से है सर. जब जो सोल सुसाइड करती है तो उनका क्या ये प्लान में इंक्लूडेड होता है कि वो सुसाइड करेंगे? No. There is no planning for suicide. Suicide is a stupid thing, and suicide is the greatest failure in the soul evolution. Whatever the soul goes through on the planet Earth, whatever the greatest challenges, whatever the hardships, whatever the trauma, the struggles on the planet Earth, but still it's a great success on the soul level. On the soul level, it is still a success. The only failure in the soul evolution is a suicide. So suicide is never planned. Suicide is never encouraged by the higher masters, and you should not commit any suicide at any cost. Whatever might be the challenge, suicide is absolutely no. Because in the spiritual evolution, in the path of the soul evolution, suicide is the only failure, and nobody encourages it. And if somebody does commit suicide, they have to take multiple lives again and again with a greater difficulty, with a greater challenge, until they learn the lesson not to commit suicide. So
if somebody is having suicidal thoughts, they should immediately come out of it. And if any of your friends are having these suicidal thoughts, you should counsel them. You should explain them about meditation. You should explain them about the soul journey. And suicide is absolutely no whatsoever. And you should not also encourage. You should also not feel sympathy or pity for any people who commit suicide. If you are feeling pity and sympathy, then that also motivates them to commit suicide. So there should be no absolutely pity or sympathy. You should educate them not to do suicide. Okay. सर जो पेशेंट को सिजोफ्रेनिया है तो वो समझते नहीं है ना. हमारे घर में 2 ऐसे केस थे जो दोनों को सिजोफ्रेनिया था और दोनों ने सुसाइड किया सर. Okay, it is their learning, it is their karma. You just make an attempt, you just tell once, you do your best and leave the rest. Okay, next. All right, so next question, Parul. Hello, good afternoon, good evening, sir. Sir, I have one question related to soul understanding. Like when we meditate, we have our body sensations and vibrations in different body parts. So, like if it's in Agya Chakra, it will give like sensations in your neck or something to your nerves. So, what impact it basically given to the meditator? Madam, when you're doing meditation, you will go through many experiences. Yes. You will go through energy movements in your physical body. You will feel a lot of energy movements all over your body. And you will also feel pain in different parts of the body. You will also have metaphysical experiences like tingling and third eye and astral travel. All those things, it's not compulsory. Everybody will have it. But some people will have it, some people will not have it. It all depends on their karmic baggage and their own soul evolution. If somebody is a meditator in the past life, then they will not go through the same experiences. But somebody is a meditator for the first time, they will have all those experiences. So you should just witness, okay? All those experiences you witness, you enjoy the experience and come back to the breath. There are certain experiences which are not pleasant, like going through a lot of body pains, it's not a pleasant experience, but have the trust it is temporary. So while you are going through the pain, come back to the breath. The more you witness the breath, the more it helps you to relieve the pain. And this pain is all your burning of your karma from your past lives. So this is a self-healing process. It is very natural, sir, and you don't need to worry about it. Sir, one question, like it's that karmas is related to our past life karmas as well. Because when we meditate, we will go into our deep soul. So deep soul gives us shows us a different experience. Like then we will have some thoughts coming in the night while we are sleeping. So the lot of intuition things are also coming towards us. Sometimes it's happened what we see in our dreams or in our while sleeping. That happened next few weeks or few months. So it is the part of right meditation, or it is we need to change our meditations something. You don't need to change your meditation if you're doing the right meditation, right? Without any mantras, without any visualization. You are just closing your eyes and observing your breath. And this is the right meditation. This is Raja Yoga. This is Anapanasati. So when you're doing the right meditation, you don't need to worry about anything else. You don't need to analyze your past. You don't need to analyze any of your meditation experiences. You don't need to analyze your dream experiences also. So we have to learn to live in the moment. This moment, are you mindful? This moment, what does your intuition say? You follow that. So we should always follow the heart. What does your heart say this moment? You follow that. So the more you meditate, the more you empty the mind. The more you empty the mind, the more your heart will start speaking to you as intuition, as feelings. Correct. So it is important we focus on emptying the mind. We don't focus on anything else. The rest of the things is an automatic process. It's a beautiful, you will be in the right step. You will make the right step, right choices in the right. So you just focus on meditation. Don't focus on karmic clearing. Don't focus on dreams. Don't focus on past lives. So focus on what is the lesson I need to
in this moment? How can I make a better person? How can I transform my emotions, my negative emotions into positive emotions, my fear-based emotions into love-based emotions? So we all have fear, guilt, shame, feeling unwanted, rejection. All these are negative emotions. So the more and more you do meditation, the more you are transforming that emotion into the strength, compassion, into love, into friendship, into oneness. So it is important we focus on the present moment, not to focus on meditation experiences, not to focus on dream experiences. Focus on the present moment, be mindful, listen to your heart. That is very important. Okay, thanks. Thank you, ma'am. Okay, so I think more and more hands are raising. I wanted to quickly clear. Okay, Neha. Hello, sir. Wanted to ask that actually the law of cause and effect is a universal law. So each time a cause is generated, either by your thoughts, words, or action, an effect is attached to it. So I couldn't understand. This is that how can meditation lead to the burning of the karma, the karmic cleansing? Okay, the experience as you shared at the end, that it is really Madam, good. Okay, you have a very good question, but there are some videos about the karma, right? I have explained in detail about karma and how karma meditation helps in karma. So that extensive video is there. Neeta madam will send you the link. Madam, please chat me a link. Bhej dena. So Neha ji, you will understand that. You please go through that video first, and then if you have still questions, then you ask. We'll answer you. Okay. Thank you. So I think, friends, more and more questions are there. Okay, so we'll take Aarti also. Aarti, just in short. Aarti ji, short. Okay, sir. Sir, बस आश्री प्रणाम और किसी दिन. All right. Okay. Thank you. So, okay. So next, we'll take Krishna Jalan. Can you unmute and speak, madam? गुड इवनिंग सर. हाँ, yes, madam. कहाँ से बोल रहे हैं? जी सर, मैं उड़ीसा कटक से बोल रही हूँ. Okay. जी, आज मैंने पहला ही क्लास किया है तो मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि इसको मैं कंटिन्यू कैसे करूँ, कैसे कंटिन्यूटी के साथ रहूँ. You follow us for the next 21 days. It will become part of your life. Okay. Okay, make sure you are part of this group for 21 days. After 21 days, you don't need to make effort. That will be part of your life. Okay, actually कभी-कभी मुझे थोड़ा डिप्रेशन हो जाता है सर. तो everything is fine, madam. You are feeling depression because you know why people feel depressed. Stupid people don't feel depressed. Do you know that? Okay. Stupid people never feel depressed. They are very happy with their life. Only intelligent people, only the people with great potential, soul potential, they know they can do better, but they are not able to do. Only those people go into depression. So if you are feeling depression, that means you are a very intelligent person, but you need to find the way. So how to find the way? Do more meditation, eat right food, eat vegetarian food, don't eat garlic, do more meditation and read spiritual books. Then you are no more depressed. You are celebrating your life. Okay. Thank you so much. Yes. All right. So next, Pooja Sharma. Thank you. So my question is this, that I want to, I think that I have one problem, that I'm lacking patience, because there's a person, very toxic person in my life. I try to control myself every time, that he tried to provoke me every time. I try to control myself to have the patience, but I'm not able to do that. What should I do? This is exactly what you should do. Whatever we told since the beginning, you practice it, make yourself part of this 21 days and practice meditation. You practice all the 6 things we said, and still you have the problem, you ask me on the 21st day. But if you sincerely practice these things, your problem will disappear within the 21 days. Okay, take it as a challenge. Okay, sir. Thank you. Thank you. All right. So जो लोग नए लोग जुड़े हैं सर, वो पुराना वाला 22 डेज का लिंक इन लोगों के ग्रुप में शेयर करूं क्या आपका?
उसमें काफी Yes. आंसर्स हैं. Yes, madam. You please share all हाँ. the previous link, and it is highly recommended you watch the previous हाँ. retreat videos so हाँ. that you get some answers. At least And वो it- आपका पोर्शन देख लें वो, है ना? And yes, it Meditation is को छोड़. maybe the question and answer portion you can edit it and post it on the YouTube, madam. Maybe that will be helpful. In your group, you post it. I will ask someone, sir. Yeah, If if she possible. can. हाँ. Yeah. हाँ. Yes. Okay. Ritesh, Tanu, Ritesh ji, yes, unmute करके बोलो. Yes, sir. Thank you very much, sir. Can you hear me, sir? Yes, sir. We can hear you. Where are you from, sir? I am speaking from Kanker, Chhattisgarh state. Kanker. Yes, Kanker. It's located 140 kilometers from Raipur. Yes, I visited that place. I know that, sir. Yes, sir. Okay, Go ahead. It's on the Raipur-Jagdalpur route in midway. Yes. Okay. Yes. Sir, I have got two questions. One at a time. Yes. I'm a beginner in meditation. From the past 15-20 days, I have been practicing this Anapanasati meditation, seeing YouTube videos. The problem I face is I start very well, but after 15 minutes, approximately 15 minutes, I am not able to continue. Means I have to try really hard to continue. I can stretch it for 20 minutes, but as I am aged 40 plus, I should sit for at least 40 minutes. But I am not able to stretch it to 40 minutes. After 15-20 minutes, I feel like it's enough. I should get off now. Okay. Yes, that is not only your problem, sir. That is the problem for most of the beginners. So that's why I said the secret of meditation is not to open the eyes. So at any cost, you feel like opening the eyes, don't open. You say, I will not open. Whatever the uncomfortable I will feel, I will not open my eyes. Whether I meditate or not doesn't matter, but I don't open the eyes for 40 minutes. You do this exercise, then naturally you will feel comfortable. Okay. So shall I ask my second question? Next, yes, shoot, sir. Sir, I have also read this book, Autobiography of a Yogi by Paramhans Yoganand. And in that book, I have seen that at many places it has been mentioned about Kriya Yoga. So my query is, how different is Anapanasati from Kriya Yoga? Because It's the same. Yoganand, It's the same, sir. It's the same. Okay. In Kriya Yoga, there is a particular discipline. You have to discipline. There is certain things you need to follow. Prepare yourself. You prepare your body, and then you go into meditation. That is Kriya Yoga. But in Anapanasati, we just directly use our breath to empty our mind. Okay. So Kriya Yoga and Anapanasati, they both are the same. But Anapanasati is very simple. It's very easy and very efficient. Okay, so Kriya Yoga has a little more discipline because it was introduced in the dark ages where there is a lot of world wars, World War II, and there is energies in the planet Earth is very negative. So there needs a certain discipline in those days in 1950s, 1940s. But now we are in the age of light. We are connected via Zoom. 50 years ago, you want to learn meditation, you have to search your guru for 20, 30 years. Then the guru might think to teach or not. But now meditation is knocking your door. Meditation is knocking your WhatsApp. Meditation is coming to your email. So this is a new age. In the new age, the best and the most efficient is Anapanasati, where everybody can do. Okay. And so sir, everybody can do. Just like Kriya Yoga burns all the karmas, positive, negative. This also burns. Anapanasati also burns. Yes, for the new age. Anapanasati is for the new age. Okay. And thank you so much. It is equally efficient like Kriya Yoga. If you practice it well, if you practice with mindfulness, you practice Anapanasati, you practice mindfulness, you become a vegetarian, you are sincere, then it is as good as Kriya Yoga. Okay. One last question, sir. You said only two, sir. Sir, it's connected with this. It's just related with go meditation. ahead. Shoot. Is it necessary that I sit in a dark room and meditate, or like early in the morning while sunrise in the open? It is not necessary. It is not necessary.
You can sit in the nature. You can sit in the nature and meditate. But whenever you are sitting in a room, so darken your room. That will help in meditation. But it is not necessary. Okay, sir. Thank you so much. Yes, sir. Thank you. Okay, so friends, I think, okay, Lavina ji. Because it's the first day, okay, I will take a few more questions. Yes, Lavina ji, बोलिए आप कहाँ से? नमस्ते, नमस्ते सर, पूना से। हाँ मैडम, बोलिए। सर मैंने पूरा आपका जो कोर्स है पूरा किया वो 21 डेज का। हाँ मैडम। और इसमें ये पता नहीं है मुझे ड्रिंक्स वगैरह करनी है कि नहीं, वाइन या बियर? Oh, wine or beer after the retreat you can enjoy, madam. Not now, because this is a 21 days detox. So in this 21 days, no coffee, tea only. Forget about wine and beer. So, but after 21 days you can enjoy, no problem. Okay, thank you, sir. But there is a possibility you may not like wine and beer frequently. Once in a while you might enjoy after the retreat. Because when you follow this retreat, all the things which is not good for you, it will go away. But all the things which is good for you, you will take it. So no wine, 15 days में 1 day, 15 दिन में एक बार. After the retreat, you try, madam. This detox, no alcohol in the detox. Yes. Thank you. Okay, madam. Thank you. Thank you. Okay, Sweta Srivastav something. Yes, madam. Can you unmute and speak? You're still on mute, Sweta ji. Unmute karke. Okay, can you hear me now? Yes, very loud and clear. Go ahead, madam. Namaskar, sir. Actually, my question is this, that you are always using the word mindfulness, and we are raised with this multitasking culture where as a woman or as a working woman, we have to, do a lot of work at the same time. If we are in kitchen at the same time, you're washing our clothes madam, also. I understand. Yes, I understand your question, but many people had the same question with the first retreat. How practical and how Let me answer possible to go for that? Let me answer. I know where you're coming from. I know your question. So let me answer. You have a very good question. This is the same question many people had in the retreat one. So just do it as an experiment. Okay. When you do mindfulness, you think you are doing many things. But what is happening is your work is not efficient when you do mindful, and also you get very tired and you are not enjoying your work. And that's why the life sucks. This is the training, unfortunately, the society has imparted. And especially women are good at multitasking and they feel that they have to do multitasking. But just do this experiment. Do one thing at a time and you will see the beauty that you are not getting tired. And also you will see the beauty, you are very efficient in whatever you are doing. For example, in 1 hour, you are doing multitasking, cooking, cutting, feeding the children, and you are cleaning within this 1 hour. Just do this experiment. Please be mindful. Just do one thing at a time. Within the same 1 hour, you will do the same work in a greater efficiency and you will enjoy it and you will not feel tired. And there is a possibility you will finish it off in 40 minutes. Try this experiment. There are hundreds of people in the previous retreat. They have experimented and they made a decision in their life that they will never do multitasking in their life. So you can also do this experiment. Okay, thank you, sir. But you have to do your own experiment. Okay. Stop multitasking and one thing at a time. One thing at a time. Only one thing at a time. Mindfulness means whatever you are doing only that, nothing else. When you are eating food, you are only eating food. You are not watching TV, you are not reading book, you are not doing anything else. And you will be enjoying the most delicious meal. Anything you do with mindfulness, you will enjoy, you will celebrate your life. When you do multitasking, you drain your energies and you feel tired, you feel sick sooner or later. So try this experiment. Okay, where are you from, madam? Thank you, sir. I'm from Delhi. You're from Delhi. Okay. All right. You do this experiment and share with us later on.
Thank you. Sure, sir. Next, Sarita Kumari. Yes, madam, unmute करके बोल दें. बोलिए, Sarita. Hello. Madam, you start Hello. from where are you from and shoot the question. सर क्या आप हमको सुन सकते हैं? पहले आप बताइए कहाँ से हैं, फिर आप क्वेश्चन पूछिए. मैं उड़ीसा से हूँ. हाँ, पूछिए. ठीक है मैडम, पूछिए. सर हम लोग तो मेडिटेशन करते हैं, लेकिन जो 21 डेज का आपका मेडिटेशन है वो मतलब सुबह और शाम दोनों टाइम करना है, और सुबह करना है तो कितने समय में और शाम को कितना, मतलब सुबह जैसे 1 घंटा बोलते हैं तो सुबह मैंने कैसे, मतलब जैसे टाइमिंग हम लोग प्लान में रहो, सुबह इतना से इतना टाइम करें फिर शाम को इतना करें. ठीक है, ठीक. You will get the answer. You will get the answer. Neeta ji will speak. मैं आपको बता दूंगी. आप कभी भी बैठ सकते हैं, है ना, सुबह दोपहर शाम, और शाम को यहाँ पे तो हमारे साथ बैठेंगे ही. शाम को मैडम कितना बजे से शुरू होगा? 3:30 बजे रोज रहेगा, यही लिंक रहेगी. तो ग्रुप मेडिटेशन आपका यहाँ पर हो जाएगा, पर इंडिविजुअल जो व्यक्तिगत रूप से आपको मेडिटेशन करना है वो आप कभी भी अपने समय अनुसार आप बैठ सकते हैं जब आप फ्री हो जाए, है ना. अच्छा मैडम, जो हम लोग सोते हैं मैडम तो बस मैडम, you are asking too many questions. बाद में. Okay, next रूपाली कुलकर्णी. आप लोग पहले हाथ नहीं खड़े करते हैं, फिर उसके बाद हैंड रेज करने लग जाते हैं एक दूसरे की देखा देखी करके. Yes, रूपाली जी बोलिए. नमस्ते सर. मैं धारवाड़ से हूँ, कर्नाटका. पहली बार अभी जूम पे आई हूँ आपके सेशन पर. सर मुझको बहुत अच्छा लगा. सर टाइमिंग्स कब रहेंगे सर मैं इसका मेडिटेशन का, ग्रुप मेडिटेशन का? 3:30 बजे मॉर्निंग मैडम? नहीं, ये रोज शाम को होगा ना ग्रुप मेडिटेशन. Okay sir. Okay madam, I was not knowing about it. And sir, I want to know about sankalpa. We'll do sankalpa no before meditation. Meditation, the very definition of meditation is empty mind. So before you sit for meditation, you should have no expectations. You should have absolutely peaceful, relaxed body, relaxed mind, and focus on the breath. Sankalpa is during when you have more and more energy, then whatever the sankalpa is your intent, right? Your sankalpas will manifest, but you don't need to put sankalpa to sit in meditation. But you do the right meditation, all your sankalpas will manifest. Focus on meditation, naturally sankalpa will manifest. Okay, madam? Thank you, sir. Thank you so much, sir. Yes. All right. So there is SN, somebody SN. I don't know what's this. Hello, sir. Happy evening to you. I am Shreyas Buddha, and I am from Trivandrum. So I have a question that I have experienced eating garlic, but I have no fear of any bad dreams or anything. There is nothing, but you have told to the other participants that garlic is causing the fear. What is the scientific reason behind this? Garlic. Okay, it's a very good question. Very sweet voice, sir. Very sweet. Yes. वीडियो ऑन करना था ना, हम देखते थे आपको. So you see, garlic, when you eat garlic, what happens? There is also a science behind it. So when you eat garlic, it calcifies the pituitary and the pineal glands. So your pituitary and the pineal glands are the master glands, which are connected to your 6th and 7th chakra. Okay, there is a lot of research done in the Western universities. When you eat garlic, the calcification of the pituitary and the pineal gland happens. So when this pituitary and the pineal gland, when these glands, they are very soft tissues. When this gets calcified, what happens? The amount of the cosmic energy, the amount of light which we receive, gets minimized.
So when there is less light, that means there is more darkness inside. So darkness is nothing but fear. So fear means as such not real fear. Fear related thoughts, fear related emotions, fear related actions, everything. So for example, anger, jealousy, hatred, greedy, these are all fear based. Okay, feeling unwanted, feeling rejected, and going through the guilt and going through the shame, everything is fear based energy. So the opposite is love based. So when you stop eating garlic, then you are not putting more energy, consciously fear energy. And when you start doing meditation, you receive more and more light energy. So you will be vibrating in the love frequency. So you may not feel physical fear, but psychologically, emotionally, subconsciously, some of the thoughts you radiate is fear-based. It's not fear, it's fear-based. So that will disappear slowly, slowly if you stop eating garlic. Okay, so there is a science behind it. As I said, the pituitary and the pineal glands gets calcified. That's why if you do more meditation and open your third eye, you will see that garlic is created by a dark force. Garlic is created by Asura, Rakshasas. So they have created garlic to imbibe the fear consciousness in the humanity, so that when the humanity is in the fear, then it's easy to control. Only when you are fearful, somebody can control you. If you are not fearful, nobody can control you. You are a master. So that's why all the yogis, all the rishis, all the monasteries, all the temples, they avoid garlic because it's a scientific reason. It has a spiritual reason also, it has a scientific reason also. Okay. Thank you very much, sir. Thank you. Thank you. What's your name? Shreyas is Buddha, ma'am. Shreyas. Praise Buddha. Oh, wow. Okay, good, great. Thank you. So friends, if you have more questions, you can watch the previous videos, and also you can always ask Neetaji. She is a great master. She will answer all the questions regarding meditation, and anything questions regarding the retreat also she will be asking. And if you have still any more questions left, we will take it. We have 21 days, except Saturday, Sunday, we won't speak, but rest of the days we will always take questions. We will always do some interaction. And as I said, spirituality is to make a better version of ourselves. And these 21 days, find a lot of beautiful things about our own selves. Okay. So yes, madam, you can, I will stay for another few minutes, but if you have any questions, you may ask, or else you can continue with the translation. नहीं सर, आप छोड़ दीजिए ना, लीव कर दीजिए. और परन ने बोला है कि मैं हर एपिसोड का, जो 22 डेज के हर एपिसोड के क्वेश्चन आंसर्स को कट करके अलग से भेज दूंगी सारे ग्रुप्स में. Okay, madam. Thank you very much. You do the translation. Okay, friends. Namaskar and namaste to everyone. Dhanyavad. So we will meet again tomorrow, 3:30. We will meet. Thank you, very sir. much. Thank you so much, sir. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you. Pleasure. Bye-bye. Bye-bye. तो फ्रेंड्स, मैं थोड़ा जल्दी आप लोगों को कंप्लीट करके बता दे रही हूँ ट्रांसलेशन. एक लड़की ने पूछा था कि मेरा मेडिटेशन के दौरान मेरा शरीर आगे की तरफ झुक जाता है, उसके कारण मेरे मेडिटेशन में बाधा पड़ती है, तो मैं क्या करूं. तो सर ने कहा कि अगर आपका शरीर आगे की तरफ जा रहा है या पीछे की तरफ जा रहा है, आप उसको होने दीजिए, बस आप अपना फोकस ब्रेथ की तरफ ही करिए. पर यदि अगर आपको उस भाग में दर्द दे रहा है या आप अनकंफर्टेबल हैं, तो आप अपने पोजीशन में वापस आ सकती हैं. नहीं तो नेचर के अलावा वो अपने बॉडी को हिलने दीजिए जैसा भी हिल रहा है. और उन्होंने कहा था कि कैसे मैं अपने मेडिटेशन को बढ़ाऊं, तो उन्होंने कहा कि धीरे धीरे आप अपने स्टेप बाय स्टेप अपने आप को अपने मेडिटेशन के टाइम को बढ़ाइए. अपने आप को फोर्स मत करिए कि मैं अपने मेडिटेशन के घंटे को 2 घंटा 3 घंटा करूं. सबसे अच्छा तरीका है अलार्म मत लगाइए, अलार्म लगाने से आपको बाधा पड़ेगी. आप एक ऐसा म्यूजिक ट्रैक पसंद करिए जितना टाइम आप बैठना चाहती हैं, चाहे 1 घंटा चाहे 2 घंटा. सर ने कहा, और वैसा ही मैं भी करती हूँ, कि जब मुझे 3 घंटा बैठना रहता है तो मैं 3 घंटे की म्यूजिक अपने लैपटॉप में लगा लेती हूँ और अपने में ये संकल्प कर लेती हूँ कि ये 3 घंटा जब तक ये म्यूजिक बंद नहीं होगी तब तक कि मैं आंख नहीं खोलूंगी. तो सर भी ऐसे ही करते थे, चाहे 2 घंटा 3 घंटा, आपको जितनी
देर ये बैठी हैं उतने टाइम का म्यूजिक ट्रैक आप ऑन करके बैठ जाइए, आंख बंद करके, और मेडिटेशन तब खत्म करिए जब अपनी आंखें तब खोलिए जब वो म्यूजिक खत्म हो जाए। और माइंडफुल रहने से आप अपने काम में बहुत दक्ष होंगे, आप अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करेंगे, आप जो भी पार्टिसिपेट करेंगे, मतलब जो भी काम करेंगे उसमें कामयाब रहेंगे। ये परफेक्ट प्रेस्क्रिप्शन है, एक आदर्श सूत्र है, ये ग्लोबल मिडिल पाथ है कि आप माइंडफुल होके रहिए, आपका हर काम अच्छे से रहेगा। एक ने पूछा था कि मेरे मेडिटेशन और पूरे दिन भर में मुझे बहुत नेगेटिव थॉट आते हैं, मैं काफी डर जाती हूँ, मुझे अपनी मौत भी दिखाई देती है। तो सर ने पूछा, और वो लेडी लहसुन खाती थी, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल भी आप लहसुन मत खाइए, क्योंकि इससे हमारी फियर कॉन्शियसनेस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। आप 21 दिन के लिए आप लहसुन खा के छोड़ के देखिए, उसके बाद ग्रुप मेडिटेशन में बैठिए और अपने आप की कोशिश करिए कि आप पॉजिटिव लोगों से ज्यादा टाइम तक के उनका साथ निभाएं, मतलब उनके साथ फ्रेंडशिप करें पॉजिटिव लोगों के साथ। निगेटिव लोगों को आप अपने पास मत आने दीजिए। लहसुन छोड़ना है, पॉजिटिव लोग के साथ रहना है, नेगेटिव लोग से दूर रहना है, ग्रुप मेडिटेशन करना है। ये सब करने से आपका फियर कॉन्शियसनेस, जो आपकी चेतना डर रही है, वो हट जाएगी। एक ने पूछा था कि मैं शून्यावस्था में कितनी देर तक के रह सकती हूँ, तो सर ने कहा कि आप एक्सपेक्टेशन मत करिए और आप ये मत सोचिए कि सिर्फ शून्यावस्था मतलब नो माइंड स्टेट ही सिर्फ मेडिटेशन होता है। जितनी देर आप नेचर के हिसाब से आपको यूनिवर्स बैठा रहा है उतने टाइम तक के आप इंजॉय करिए और अपने एक्सपेक्टेशन को ड्रॉप कर दीजिए, मतलब छोड़ दीजिए, अपने आप नो माइंड स्टेट आता है। सुसाइड के लिए एक लेडी ने पूछा था, तो उन्होंने कहा कि सुसाइड कभी भी प्री प्लान नहीं होती है, ये सिर्फ उस आत्मा की असफलता है जो अपने जीवन के पाठ को बीच में ही छोड़कर इस संसार से विदा हो गई। और कोई भी स्पिरिचुअल मास्टर्स या अच्छा व्यक्ति उसको कभी भी प्रमोट नहीं करेगा। अगर कोई आत्महत्या को कमिट करता है तो कई अगले जन्म तक के उसको ऐसे ही कठिन परिस्थितियों से बार बार गुजर के होना पड़ेगा, और इस जन्म से भी ज्यादा कठिन परिस्थितियां, क्योंकि यूनिवर्स के द्वारा उसे सिखाया जाएगा कि सुसाइड करना बहुत गलत चीज है, तो उसके लिए और चैलेंजेस आएंगे। अगर आपके जानकारी में ऐसा कोई व्यक्ति है जिसमें सुसाइडल थॉट्स आ रहा है, तो आप उनको समझाइए प्यार से कि आपके भविष्य के बर्थ, जो फ्यूचर बर्थ है, वो भी आप खराब कर रहे हैं, उससे सहानुभूति मत दीजिए। आप बस अपना अच्छा काम करिए, उसे मेडिटेशन सिखाइए, उसको सोल जर्नी के बारे में बताइए, उसको आगाह करिए, बाकी उसकी खुद की चॉइस। मेडिटेशन में एक ने पूछा था, बहुत आज्ञा चक्र में कुछ सेंसेशन होता है, तो उन्होंने कहा था कि ये सभी मेडिटेशन एक्सपीरियंस है, एनर्जी मूवमेंट्स फील होता है, शरीर में दर्द होते हैं, मेटाफिजिकल थॉट्स, मेटाफिजिकल एक्सपीरियंस भी आते हैं, एस्ट्रल ट्रेवल करती हैं। ये सभी कुछ कर्मों के अनुसार हर एक सोल की जर्नी में मिलता है और सोल इवोल्यूशन पे भी डिपेंड करता है। जिन्होंने पिछले जन्म में थर्ड आई के सारे एक्सपीरियंस कर लिए, वो जरूरी नहीं है कि इस जन्म में भी थर्ड आई एक्सपीरियंस करें। सोल के हिसाब से जो उसकी यात्रा हो चुकी है उसके आगे की यात्रा वो शुरू करता है। जैसे मान लीजिए मैंने 10 किलोमीटर पिछले जन्म तक के मेडिटेशन में कवर कर लिया, तो इस जन्म में मैं 11वें किलोमीटर से चालू करूंगी। इस दुनिया में आप पैसा नहीं ले जा सकते, पर जो ध्यान की संपदा है वो आप हमेशा लेके जाते हैं और उसके आगे से आपकी जर्नी शुरू होती है। दर्द के लिए भी उन्होंने कहा था कि कोई भी अगर दर्द हो तो समझ लीजिए कि वो टेम्पररी है, आप सिर्फ साक्षी भाव से अपने ब्रेथ को ऑब्जर्व करते जाइए, आपके कर्मास बर्न होते जाएंगे, आपकी क्लिनजिंग होते जाएगी और वो दर्द चला जाएगा। किसी ने क्वेश्चन के लिए पूछा, तो मुझे क्वेश्चन में नहीं लिख पाई हूँ कि आप बिल्कुल राइट मेडिटेशन कर रही हैं, अगर मंत्रा नहीं चैंट कर रही हैं और ये आनापानसति मेडिटेशन कर रही है तो ये राजयोग है। आपको कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपकी पास्ट लाइफ में क्या था, आपके ड्रीम्स में आपको क्या दिखा, आपको उसके बारे में ना चिंता करनी है ना एनालाइज करना है। सिर्फ आप प्रेजेंट मोमेंट पे फोकस करिए, ज्यादा से ज्यादा ध्यान करिए, आप अपने दिल की आवाज को सुन पाएंगे। और ये सब आपका स्वतः ही होगा। जब आप ज्यादा मेडिटेशन करेंगे, आपका हार्ट एक्टिव होगा, आपको सही दिशा
मिलते जाएगी। आपका पूरा फोकस होना चाहिए कि मुझे इस जीवन में इस परिस्थिति से क्या सीखना है। अपने आप को बेहतर पर्सन बनाने के लिए आपके पास चूज करिए। आपके जितने भी नेगेटिव इमोशन है वो मेडिटेशन के द्वारा आपके पॉजिटिव इमोशन अर्थात प्यार बेस्ड इमोशन में बदल जाएंगे। जो भी आपके रिजेक्शन, फियर, जेलेसी जो भी है वो सभी कुछ कंपैशन, लव, फ्रेंडशिप में बदल जाएगा। एक ने कहा था मुझे डिप्रेशन का कुछ प्रॉब्लम है, तो उन्होंने कहा था कि बेवकूफ लोगों को कभी डिप्रेशन नहीं होता है, सिर्फ इंटेलिजेंट लोगों को डिप्रेशन होता है। परंतु हाँ, उसका एक रास्ता है और वो है वेजिटेरियनिज्म और मेडिटेशन। आप लहसुन बिल्कुल मत खाइए, मेडिटेशन ज्यादा करिए, आपको अपना डिप्रेशन से बाहर आने का रास्ता मिल जाएगा। क्रिया योग और आनापानसति बिल्कुल सेम टू सेम होते हैं। क्रिया योग बहुत पहले के जब डार्क एज चल रही थी पृथ्वी में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में, तब इसको खोजा गया था और तब एक गुरुकुल की जो सुविधा रहती थी उसके कारण उस समय एक शिष्य को डिसिप्लिन करके, अनुशासित करके उसको फिर पूरी मुद्राएं वगैरह कराने के बाद आनापानसति मेडिटेशन में बैठाया जाता था। उस समय जबकि लाइट कम थी, डार्क एज था, पर अब चूंकि न्यू एज आ गया है, बहुत प्रकाश है, तो अब आपको अपने बॉडी को, अपने आप को डिसिप्लिन करने की जरूरत नहीं है। आप सीधा मेडिटेशन में बैठ सकते हैं। इस डिटॉक्सिफिकेशन के टाइम में कोई अल्कोहल नहीं लेना है। एक ने कहा था कि मैं वर्किंग वुमेन हूँ, मैं मल्टीटास्किंग करती हूँ, किचन में काम करते करते भी मैं अपने ऑफिस के काम कैसे निपटाने उसके बारे में सोचती हूँ, तो मैं से कैसे इसको छोड़ के सुखी हो पाऊंगी। तो सर ने कहा कि सभी लोगों को बहुत गलत फहमी होती है कि हम मल्टीटास्किंग करके बहुत सारा काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं। ये सिर्फ आपकी गलत फहमी है। आप अपनी एनर्जी को सक करवा रही हैं, आप एफिशिएंट नहीं होती हैं जो भी काम कर रहे हैं, आप ड्रेन हो जाती हैं, आप थक जाती हैं। जो भी काम करती हैं वो इंजॉय के द्वारा नहीं करती है। यदि आप खाना इंजॉय करके नहीं बनाएंगे तो वाइब्रेशन भी वैसे पड़ेगी। तो आप सिर्फ एक ही टाइम में एक ही काम करिए। हो सकता है आपको लगे कि ये बहुत महंगा सौदा है, पर धीरे धीरे आप देखेंगे कि उसमें टाइम भी कम लग रहा है, उसमें आप थक भी नहीं रही हैं और आपके हर काम में एफिशिएंट होते जा रही हैं। संकल्प लेने के लिए सर ने कहा है कि कोई आपको जरूरत नहीं है, मेडिटेशन करते जाइए, आपके संकल्प स्वतः ही पूरे होते जाएंगे। लेसन के लिए एक बच्चे ने जो पूछा था कि मैं तो लेसन लेता हूं पर मुझे कोई फियर एक्सपीरियंस नहीं होता है, क्या है साइंटिफिक रीजन? तो सर ने कहा कि हमारी जो 6th और 7th चक्र, आज्ञा चक्र और क्राउन चक्र से रिलेटेड पिट्यूटरी ग्लैंड और पीनियल ग्लैंड है, उन दोनों के सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं जो कैल्सिफाइड हो जाते हैं लहसुन खाने से। और जब वो कैल्सिफाइड हो जाते हैं तो जब हम कॉस्मिक एनर्जी लेते हैं, वो जो लाइट एनर्जी हमारे अंदर आती है उसकी क्वांटिटी कम हो जाती है, वो लेस अमाउंट में हम ले पाते हैं और जो हमारे अंदर का अंधकार है वो कम नहीं होता। तो हमारी लाइट एनर्जी हमारे पास ज्यादा आना चाहिए। तो वो अंधकार क्या है जो हमारे अंदर है? वो है फियर बेस इमोशंस। फियर का मतलब सिर्फ डर ही नहीं होता जो आप फिजिकली किसी चीज से डरते हैं। फियर का अर्थ होता है फियर बेस्ड इमोशन, जो एंगर है, जो हेट्रेड है, जो जेलसी है, जो रिजेक्शन की भावना है, रिवेंज की भावना है, जो भी नेगेटिव थॉट्स हैं वो सारे फियर बेस्ड होते हैं। सिर्फ दो ही बेस्ड इमोशंस होते हैं, फियर बेस्ड और लव बेस्ड। तो फियर बेस्ड आप सबको मैंने अभी बता दिया, आप खुद भी बहुत जानते हैं। लव बेस्ड, लव, कंपैशन, ग्रैटिट्यूड, वो आपका तभी बढ़ेगा जब आपके फियर कॉन्शियसनेस कम होएगी। आप मेडिटेशन कर लीजिए और लेसन को बिल्कुल छोड़ दीजिए ताकि फियर से रिलेटेड वो जो भी इमोशनली और मेंटली इमोशन है वो आपके शरीर से दूर हो जाए। और ये बात थर्ड आई एक्सपीरियंस जिन्होंने किया है बताया है कि लेसन को असुरों ने बनाया था और वो इसलिए बनाया था ताकि लोगों के मन में एक डर की भावना आ जाए, तभी वो असुर, वो नेगेटिव एनर्जी हमसे, हमारी एनर्जी को सक करती है जब हम फियर बेस्ड इमोशन, लस्ट, ग्रीड और हेट्रेड वगैरह में रहते हैं। तो ये असुरों ने बनाया था ताकि वो हमारे ऊपर कंट्रोल कर सके। तो अगर आपको अपना ट्रांसफॉर्मेशन करना है, हीलिंग करनी है, तो गार्लिक से दूर रहना है, नॉनवेज से दूर रहना है और मशरूम से दूर रहना है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, बहुत टाइम हो गया है और मुझे आज बहुत इम्पोर्टेंट काम भी है, तो मैं बिल्कुल भी 1 मिनट भी देरी नहीं करूंगी। सॉरी, मुझे प्लीज आज छोड़ दीजिए। कल फिर मिलेंगे 3:30 को। इस लिंक को ज्यादा से ज्यादा लोगों को
प्लीज 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 शेयर करिए। और जो मैं आज शेयर करूंगी ग्रुप में 22 डेज रिट्रीट का प्रदीप सर का, उसको आप देखिए जब तक कि मेरी डॉटर उसमें से एडिट करके क्वेश्चन आंसर्स निकाल के भेजिए। आप पहले का मेडिटेशन आप छोड़ दीजिए और मेन जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उसमें रिलेशनशिप से लेके जो बार बार क्वेश्चन वही आ रहे हैं जो हमारे पुराने रिट्रीट में हो गए, तो मैं चाह रही हूँ कि आप लोग रात के समय में जब भी टाइम मिले तो उसको देखिए ताकि वही क्वेश्चन हम नहीं पूछें और भी सब चीजें आपको क्लियर होते जाएंगी।